growth in the West. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years, starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradeep and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. And C, launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047. To enhance last mile and remote connectivity and promote tourism, I propose to give incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. A seaplane VGF scheme will be also introduced to provide support for operations. Carbon capture, utilization and storage. Aligning with the roadmap launched in December 2025, the carbon capture, utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness and in end-use application across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries, and chemicals. An outlay of 20,000 crore is proposed over the next 5 years for this purpose. City economic regions. Cities are India's engines of growth, innovation, and opportunities. We shall now focus on Tier 2, Tier 3 cities, and even temple towns, which need modern infrastructure and basic amenities. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers. An allocation of 5,000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform-cum-result-based financing mechanism. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. Financial sector. The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet, historic highs in profitability, improved asset quality, and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture, we are well placed to futuristically evaluate the measures needed to continue on the path of reform of this sector. I propose setting up a high-level committee on banking for Vikasit Bharat. High-level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth, while safeguarding financial stability, inclusion, and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption in order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs. As a first step, it is proposed to restructure
the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. I propose a comprehensive review of the foreign exchange management non-debt instruments rules to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments consistent with India's evolving economic priorities. Corporate bond market. I propose to introduce a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds. Municipal bonds. To encourage the issuance of municipal bonds of higher value by larger cities, I propose an incentive of 100 crore rupees for a single bond issuance. 100 crore rupees for a single bond issuance of more than 1,000 crore. The current scheme under Amrit which incentivizes issuances up to 200 crores only, will also continue to support smaller and medium towns. That will also continue to support the smaller and medium towns. Ease of doing business. Individual persons resident outside India, PROI, will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the Portfolio Investment Scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under the scheme from 5% to 10%, with an overall investment limit for all individual PROIs to 24% from the current 10%. Emerging technologies including AI. 21st century is technology-driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI Mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. Our second kartavya is to fulfill aspirations and build capacities. Close to 25 crore individuals have come out of multi-dimensional poverty through a decade of our government's sustained and reform-oriented efforts. Our government has therefore decided to place a renewed emphasis on the service sector to provide a pathway to fulfilling aspirations of a youthful India with the following measures. I propose to set up a high-powered Education to Employment and Enterprises Standing Committee to recommend measures that focus on services sector as a core driver of Vikasit Bharat. This will make us a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment, and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof. To create a range of skilled career pathways, a new range of skilled career pathways for our youth, I propose interventions in the following sectors. Health. Existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover
10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. A strong care system covering geriatric and allied care services will be built. A variety of NSQF-aligned programs will be developed to train multi-skilled caregivers, combining core care and allied skills such as wellness, yoga, and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained. Hubs for medical value tourism. To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational, and research facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers, and infrastructure for diagnostics, post-care, and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given a mass global recognition when Honorable Prime Minister took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to 1. Set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2. Upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3. Upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training, and awareness for traditional medicine. Animal husbandry. Livestock contributes to close to 16% of farm income, including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories, and breeding facilities in private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated. Orange economy. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, AVGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up AVGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. The Indian design industry is expanding rapidly, and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish, through Challenge Route, a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India. Education. Our government will support states through Challenge Route in creating 5 university townships
in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges, and research institutions, skill centers, and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, Viability Gap Funding and capital support, one girls' hostel will be established in every district. To promote astrophysics and astronomy via immersive experiences. 4 telescope infrastructure facilities will be set up or upgraded. The National Large Solar Telescope, the National Large Optical Infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope, and the Cosmos 2 Planetarium. Tourism. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, forex earnings, and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry, and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a standardized, high-quality, 12-week training course in hybrid mode in collaboration with the Indian Institute of Management. A national destination digital knowledge grid will be established to digitally document all places of significance, cultural, spiritual, and heritage. This initiative will create a new ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators, and technology partners. India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podigai Malai in the Western Ghats. Turtle trails along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka, and Kerala. And 3 bird watching trails along the Pulikat Lake in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. It's on the border. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, we established the International Big Cat Alliance in 2024. This year, India is hosting the first ever Global Big Cat Summit, where heads of governments and ministers from 95 range countries will deliberate on collective strategies for conservation. Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, including Lothal, Dolavira, Rakhi Gadi, Adichanallur, Saranath, Hastinapur, and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers, and guides. The sports sector provides multiple means of employment, skilling, and job opportunities.
Taking forward the systematic nurturing of sports talent, which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers, which are foundational, intermediate, and elite levels. B, systematic development of coaches and support staff. C, integration of sports science and technology. D, competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E, development of sports infrastructure for training and competition. Our third Kartavya aligns with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts for 1. Increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. C. Empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D. Focus on the Purvodaya states and the Northeast region to accelerate development and employment opportunities. Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2. Strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. Animal husbandry. To provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas, we will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through A. A credit-linked subsidy program. B. Scaling up and modernization of livestock enterprises. C. Enhanced creation of livestock, dairy, and poultry. Enhanced creation of livestock, dairy, and poultry-focused integrated value chains. And D. Encourage creation of livestock farmer-producer organizations. High-value agriculture. To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes, and create new employment opportunities, we will support high-value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts, and pine nuts in our hilly regions. All of them will be supported. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. Sandalwood. Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage. Our government will partner with state governments to promote focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem, to rejuvenate old, low-yielding orchards, and expand high-density cultivation of walnuts, almonds, and pine nuts
We will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth. Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. She Marts for rural women-led enterprises. Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, She Marts will be set up as community-owned retail outlets within the cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments. Empowering Divyangjan. Divyangjan Kaushal Yojana. Information technology, AVGC sectors, hospitality and food and beverages sectors often offer task-oriented and process-driven roles which are suitable for Divyangjan. We will ensure dignified livelihood opportunities through industry-relevant and customized training specific to each Divyangjan group. Divyang Sahara Yojana. Timely access to high-quality assistive devices for all eligible Divyangjan is a fundamental need. I propose to 1. Support the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Alimco, to set up and to scale up production of assistive devices, invest in R&D and AI integration, strengthen PM Divyasha Kendras, and support setting up of assistive technology marts as modern retail style centers where Divyangjan and senior citizens can see, try and purchase assistive products. Reaffirming our commitment to mental health and trauma care. There are no national institutes for mental health care in North India. We will therefore set up a NIMHANS 2 and also upgrade national mental health institutes in Ranchi and in Tezpur as regional apex institutions. Emergencies expose families, particularly the poor and vulnerable, to unexpected expenditure. We will strengthen and increase these capacities by 50% in district hospitals by establishing emergency and trauma care centers. Focus on Purvodaya states and northeastern regions. Purvodaya. I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states, and the provision of 4,000 e-buses. Buddhist sites in northeastern region. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions. I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram, and Tripura. The scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers, connectivity, and pilgrim amenities. 16th Finance Commission. On 17th November 2025, the 16th Finance Commission submitted its report to the President. As mandated under Article 281 of the Constitution, the government is to lay
the report along with the explanatory memorandum on the action taken report on the recommendations of the Commission in Parliament, which, Sir, Honourable Speaker, you've allowed me to do at the commencement of this session. The Government has accepted the recommendation of the Commission to retain the vertical share of devolution at 41%. As recommended by the Commission, I have provided 1.4 lakh crores of rupees to the states for the year 2026-2027 as Finance Commission grants. These include rural and urban local body and disaster management grants. Fiscal consolidation. Government has been delivering on our fiscal commitments consistently without compromising on social needs. To strive towards accepted standards of fiscal management in Budget 25-26, I had indicated that the central government would target reaching a debt-to-GDP ratio of 50 plus or minus 1% by 2030-31. In line with this, the debt-to-GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in BE 26-27, compared to 56.1% of GDP in RE 25-26. A declining debt-to-GDP ratio will gradually free up resources for priority sector lending and expenditure by reducing the outgo on interest payments. One of the main operational instruments for debt targeting is the fiscal deficit. I am happy to inform this august House that I fulfilled my commitment made in 2021-2022 to reduce fiscal deficit below 4.5% of GDP by 25-26. In RE 25-26, the fiscal deficit has been estimated at par with BE of 2025-26 at 4.4% of GDP. In line with the new fiscal prudence path of debt consolidation, the fiscal deficit in BE 26-27 is estimated to be 4.3% of the GDP. The revised estimates of the non-debt receipts are 34 lakh crore rupees, of which the centre's net tax receipts are 26.7 lakh crore. The revised estimate of the total expenditure is 49.6 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 11 lakh crores. Budget estimates 2026 to 2027. Coming to 26-27, the non-debt receipts and the total expenditure are estimated as 36.5 lakh crore and 53.5 lakh crore respectively. The centre's net tax receipts are estimated at 28.7 lakh crore rupees. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.7 lakh crore rupees. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 17.2 lakh crore rupees. I'll now move to Part B. Part B, direct taxes. Honourable Speaker, sir, I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements.
The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme for small taxpayers wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities in multiple companies, I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number. To address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. This scheme would be applicable for two categories of taxpayers, namely, A, who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty, and would thereby get immunity from prosecution. For category B, asset value is proposed to be up to 5 crore rupees. Here, immunity from both penalty and prosecution will be available with a payment of fee of 1 lakh rupees. Rationalizing penalty and prosecution. Multiplicity of proceedings are hindrance to the ease of doing business. I propose to integrate assessment and penalty proceedings by way of a common order for both. There will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. Further, quantum of prepayment is being reduced from 20% to 10% and will continue to be calculated only on core tax demand.
As an additional measure for reducing litigation, I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated, and an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings. There is already a framework for immunity from penalty and prosecution in the cases of voting. I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. Penalties for certain technical defaults, such as failure to get accounts audited, non-furnishing of transfer pricing audit report, and default in furnishing statement for financial transactions, are proposed to be converted into fee. I propose to rationalize prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offence. Non-production of books of account and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offences will attract fine only. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offence. They will entail only simple imprisonment with maximum imprisonment reduced to 2 years and power to courts to convert even those into fines. There is no penalty. There is no penalty presently for non-disclosure of non-immovable foreign assets with aggregate value less than 20 lakh rupees. I propose to also provide them with immunity from prosecution with retrospective effect from 1/10/2024. Cooperatives. Deduction is already allowed to a primary cooperative society engaged in supplying milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members. I propose to extend this deduction to also include supply of cattle feed and cotton seed produced by its members. I propose to allow inter-cooperative society dividend income as deduction under the new tax regime to the extent it is further distributed to its members. I further propose to allow exemption for a period of 3 years to dividend income received by a notified national cooperative federation on their investments made in companies up to 31/1/2026. This exemption would be allowed only for dividends further distributed to its member cooperatives. Supporting IT sector as India's growth engine. India is a global leader in software development services, IT-enabled services, knowledge process outsourcing services, and contract R&D services relating to software development. These businesses and their segments are quite interconnected with each other. All these services are proposed to be clubbed under a single category of information technology services with a common safe harbor margin of 15.5% applicable to all. The threshold for availing safe harbor for IT services is being enhanced substantially from 300 crore rupees to 2,000 crore rupees. Safe harbor for IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for tax officer to examine and accept the application. Once applied by an IT services company, the same safe harbor can be continued for a period of 5 years at a stretch at its choice. For IT services companies who want to conclude advanced APA, I propose to fast-track unilateral APA process
for IT services and endeavour to conclude it within a period of 2 years. The period of 2 years can be extended by a further period of 6 months on taxpayers' request. I propose to extend the facility of modified returns available to the entity entering APA to its associated entities also. Attracting global business and investment. Recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers, I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity. I also propose to provide a safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. To harness the efficiency of just-in-time logistics for electronic manufacturing, I propose to provide safe harbor to non-residents for component warehousing in a bonded warehouse at a profit margin of 2% of the invoice value. The resultant tax of about 0.7% will be much lower than in competing jurisdictions. To provide fillip to toll manufacturing in India, I propose to provide exemption from income tax for 5 years to any non-resident who provides capital goods, equipment, or tooling to any toll manufacturer in a bonded zone. To encourage vast pool of global talent to work in India for a longer period of time, I propose to provide exemption to global, non-India sourced income of a non-resident expert for a stay period of 5 years under notified schemes. I propose to provide exemption from minimum alternate tax, the MAT, to all non-residents who pay tax on presumptive basis. Tax administration. I propose to constitute a joint committee of Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes for incorporating the requirements of income computation and disclosure standards, the ICDS, in the Indian Accounting Standards Ind AS itself. Separate accounting requirement based on ICDS will be done away with from the tax year 27-28. To support Prime Minister Modi's vision of homegrown accounting and advisory firms to become global leaders, I propose to rationalize the definition of accountant for the purposes of safe harbor rules. Other tax proposals. Change in taxation of buyback was brought in to address the improper use of buyback route by promoters. In the interest of minority shareholders, I propose to tax buyback for all types of shareholders as capital gains. However, to disincentivize misuse of tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. This will make effective tax 22% for corporate promoters. For non-corporate promoters, the effective tax will be 30%. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap, and minerals, will be rationalized to 2%, and that on tendu leaves will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125
respectively. We reformed the taxation landscape for corporates in 2019 by providing them a simplified regime with lower tax rate so that they could productively focus on business rather than on claim of deductions and exemptions. To encourage companies to shift to the new regime, set-off of brought forward MAT credit, minimum alternate tax credit, is proposed to be allowed to companies only in the new regime. Set-off using available MAT credit is proposed to be allowed to an extent of 1/4 of the tax liability in the new regime. MAT is proposed to be made final tax, so there will be no further credit accumulation from 1st April 2026. In line with this change, the rate of final tax is being reduced to 14% from the current MAT rate of 15%. The brought forward MAT credit of taxpayers accumulated till 30th March 2026 will continue to be available to them for set-off as above. Indirect taxes. I shall now take up proposals related to indirect taxes. My proposals for customs and central excise aim to further simplify the tariff structure, support domestic manufacturing, promote export competitiveness, and correct inversion in duty. To continue weeding out long-continuing customs duty exemptions, I propose to remove certain exemptions on items which are being manufactured in India or where the imports are negligible. Similarly, to further simplify the process of ascertaining the rate of duty applicable on a particular item, I propose to incorporate certain effective rates in various customs notifications to the tariff schedule itself. I shall now take up sector-specific proposals. Promotion of exports of marine, leather, and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear, and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. Critical minerals. It is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG. Civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts
required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair, or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. Ease of living. To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Viksit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade. Trust-based systems. I propose to enhance duty deferral period for Tier 2 and Tier 3 authorized economic operators, known as AEOs, from 15 days to 30 days. I propose to provide eligible manufacturer importers the same duty deferral facility. This should encourage them to get themselves accredited as a full-fledged Tier 3 AEO in due course. To provide greater certainty and for better business planning, I propose to extend validity period of advance ruling binding on customs from the present 3 years to 5 years. In the spirit of the whole of government approach, government agencies will be encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo. Regular importers with trusted, long-standing supply chains will be recognized in the risk system so that the need for verification of their cargo every time can be minimized. Export cargo using electronic sealing. Export cargo using electronic sealing will be provided through clearance from the factory premises to the ship. For import of goods not needing any compliance, filing of bill of entry by a trusted importer and arrival of goods will automatically notify customs for completing their clearance formalities. This will enable goods to be released immediately on arrival. The customs warehouse framework will be transformed into a warehouse operator-centric system with a self-declarations, electronic tracking, and risk-based audit. These reforms will move away from the current system
of officer-dependent approvals and reduce transaction delays and compliance costs. Ease of doing business. Approvals required for cargo clearance from various government agencies will be seamlessly processed through a single and interconnected digital window by the end of the financial year. Processes involved in clearance of food, drugs, plant and animal and wildlife products, accounting for about 70% of interdicted cargo, will be operationalized on this system by April 2026 itself. For goods not having any compliance requirement, clearance will be done by customs immediately after online registration is completed by the importer, subject to the payment of duty. Customs integrated system will be rolled out in 2 years as a single integrated and scalable platform for all customs processes. Utilization of non-intrusive scanning with advanced imaging and AI technology for risk assessment will be expanded in a phased manner with the objective to scan every container across all the major ports. New export opportunities to support Indian fishermen to fully harness the economic value of marine resources beyond our territorial waters. The following measures will be taken. A. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone or on the high seas will be made free of duty. Landing of such fish on foreign port will be treated as export of goods. Safeguards will be put in place to prevent misuse during fish catch, transit or transshipment. To support aspirations of India's small businesses, artisans and startups to access global markets through e-commerce, I am pleased to announce complete removal of the current value cap of 10 lakh rupees per consignment on courier exports. In addition, handling of rejected and returned consignments will be improved with effective use of technology for identifying such consignments. I propose to revise provisions governing baggage clearance during international travel to address genuine concerns of passengers. The revised rules will enhance duty-free allowances in line with the present-day travel realities and provide clarity in temporary carriage of goods brought in or taken out. There are honest taxpayers who are willing to settle disputes by paying all their dues, but they get deterred due to negative connotation associated with penalty. They will now be able to close cases by paying an additional amount in lieu of penalty. Honorable Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Jai Hind. One and a half hours. Item number 3, माननीय वित्त मंत्री जी. Item number 2, sir. 3. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 4, माननीय वित्त मंत्री जी. Sir, with your permission, I move for leave to introduce the Finance Bill 2026. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए. जो सदस्य इस पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है. माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पुनर्स्थापित करें. Sir, I introduce the bill. माननीय सदस्य, आपको सूचित किया जाता है
कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण की कॉपी पब्लिकेशन काउंटर पर ली जाती है। बजट भाषण और बजट से संबंधित दस्तावेज आपके मोबाइल फोन और मेंबर पोर्टल्स पर ही उपलब्ध है। सभा की कार्रवाई कल सोमवार दिनांक 2 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। केंद्रीय बजेट उपस्थापन कले केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जदि कह समस्त क्षेत्र को बुझ देवा भली ये बजेट उपस्थापन कराई। प्रथम जदि आम कह जिते गृह उपस्थापन करे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण तो निहती भाव में सेमी कंडक्टर ठारू आरंभ होती जदि कह घोषणा करागला सेमी कंडक्टर मिशन जो रही 2.0 घरोई विनिर्माण क्षमतार निर्माण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत लोकाभिमुखी जगह साधारण लोकों को प्राथमिकता आर्थिक यात्रा स्थिरता वित्तीय अनुशासन सतत विकास एवं नियंत्रित महंगाई द्वारा परिचित होती बजेट सेमी कंडक्टर क्षेत्र में 10,000 कोटी फंड टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्टर 5 लाख रु अधिक जनबहुल सहर में सरकार इन्फ्रा बूस्ट करेंगे। सेमी कंडक्टर 2.0 मिशन आरंभ उद्योग नेतृत्व रिसर्च एवं ट्रेनिंग सेंटर जदि आम कहते फोकस बायोफार्मा सेक्टर उपर बड़ घोषणा भारत वैश्विक बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब कहते अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। बायोफार्मा शक्ति योजना प्रस्ताव आगामी 5 वर्ष में 10,000 कोटी प्रावधान 7 रणनीतिक क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग विस्तार परंपरागत उद्योगर पुनर्जीवन एमएसएमई निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने दीर्घकालीन सुरक्षा स्थिरता मजबूत करने सिटी इकोनॉमी रीजन विकास दिल्ली वाराणसी समेत 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर घोषणा ता सहित जदि आम कह एमएसएमई सेक्टर कथा जदि कह बड़ घोषणा करछंती केंद्र एवं राज्य मिसिकरी उच्चस्तरीय समन्वित गठन करेंगे 200 विरासतर औद्योगिक जो क्लस्टर रही पुनर्जीवित करा एमएसएमई का 10,000 कोटी घोषणा आत्मनिर्भर भारत जो निधि रही 2,000 कोटी घोषणा करा से भली भाव में जदि आम कह ट्रेड्स और एमएसएमई फाइनेंसिंग मजबूत पाई घोषणा करिसेंती। ट्रेड्स जरिया एमएसएमई वर्तमान सुधा 7 लाख कोटी अधिक फंडिंग पाई एवं ट्रेड्स जो लेन देन रही ताकू केमिति प्लेटफॉर्म दिया से प्लेटफॉर्म रे ताकू सुधार अणा एवं एमएसएमई बाद जदि आम कह बायोफार्मा कथा कहबा ताहले भारत ग्लोबल हब बनियो बोली कहते केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। आगामी 5 वर्ष पर 10,000 कोटी व्यवस्था कराई प्रावधान रखाई बायोफार्मा शक्ति योजना नारे बायोलॉजिक्स एवं बायोसिमिलर जो घरोई उत्पादन केमती बढ़ाबो तापर फोकस करा जायछि। से भाव में सेमी कंडक्टर मिशन 2.0 जो शुभारंभ होती भारतीय आईपी डिजाइन एवं सप्लाई चेन को केमती मजबूत करा फोकस कराई उद्योग आधारित अनुसंधान एवं तार प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करा प्रावधान रखाई बजेट रे इलेक्ट्रोनिक्स विनिर्माण योजना जो रही लक्ष्य रखा निवेश कराई ता सहित जदि आम कह वस्त्र हाथकर जो घरोई जदि आम कह जोड़ा आम जहाँ कहे कुटीर शिल्प कथा कहे फाइबर सेक्टर कथा तापर फोकस करछंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। रेशम ता सहित उल एवं जो झोट रही राष्ट्रीय फाइबर योजना कराई पारंपरिक क्लस्टर एवं आधुनिकीकरण उपर गुरुत्व दी जाइए। रोजगार योजना वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना दाना घोषणा कराई जहाँकि बुणाकार एवं कारीगर मान गोटे प्रकार बूस्ट दब हस्तशिल्प कार्यक्रम को आग को नब टेक्स इको को किभली भाव में वैश्विक भाव में प्रतिष्ठित करा जाय परिबो सेतिपई योजना करा जायछि। वस्त्र कौशल उन्नयन पई 2.0 ये योजना मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करिया पई मध्ये प्रस्ताव रही बजेट रे। ग्रीन इंडस्ट्री और कार्बन जदि आम कह फ्यूचर कथा कहबा ताले औद्योगिक क्षेत्र में कार्बन फ्यूचर एवं तार उपयोग एवं ताको केमती स्थिर रखा जाय परिबो बा ताको केमिति संरक्षण कर रखा जाय परिबो सेतिपई मध्ये गुरुत्व दे जायछि। 5 वर्ष में 5 औद्योगिक क्षेत्र में 20,000 कोटी टंकार प्रावधान कर रखा जायछि। से भली जदि आम कह रेल जलमार्ग एवं ग्रीन ट्रांसपोर्ट पैंका
7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर सहर भितर तार विकास केमती हम से सेतु बनब दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनब आगामी 5 वर्ष में 20 नुआ राष्ट्रीय जलमार्ग हम बनारस और पाटना जहाज जदि आम कह भितर केमती तार सुविधा कर सामुद्रिक विमान माने VGF योजना तार आरंभ कर आज केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण घोषणा करछंती इंफ्रास्ट्रक्चर केमती रेकर्ड खर्च हम तापर आज प्रावधान रखाई बजेट रे 2026-27 रे पुंजीगत खर्च 12.2 लाख कोटी टंका टायर 2 एवं टायर 3 सहर रे ये इंफ्रा को मजबूत करा 5 लाख अधिक आमर मिडिल क्लास को सुविधा मिल आमर स्लैब रेटा टे अधिक बढ़ा सहीटा है बट अदरवाइज आप देखा गले इट्स ए ग्रोथ ओरिएंटेड बजेट से बहुत प्रकार स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से प्रपोज करा जायछि तो आम देश को गोटे आमर विकसित भारत आड़ को जमती आम गति करवा धीरे धीरे से हिसाब रे तार गोटे चित्र आमको मिल पारी आम ऑलरेडी आम फिस्कल प्रुडेंस भी आम देखा मिली जमती आमर फिस्कल डेफिसिट ए वर्ष 4.3 रही लास्ट आमर फाइनेंस 4.4 था एथरक आहरी 4.3 कमाई तेणु आमर ग्रोथ स्टोरी सहित फिस्कल प्रुडेंस को मध्य ध्यान दि जाइए तेणु न्याचुराली जमती प्रति वर्ष आमर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राय सबुठ अधिक एलोकेशन होता है तेणु एक्सपेक्टेड लाइन्स रे एथरक मध्य आमर 12.2 लाख करोड़ आम इंफ्रास्ट्रक्चर उपर एलोकेट करा जाइए जो थे आम निश्चित भाव भाविया ओडिशा को जे आमको बेनिफिट मिल इन दैट सेंस से स्पेसिफिकली ओडिशा पई कहते मुझोटा आगुरी भी कही जे आमर इनलैंड वाटरवेज 5 जोटा आमर तालचेर महानदी आसिक आमर धामरा और पारादीप को जोड़ से प्रपोजालटा बहुत दिन रू पेंडिंग थिला एप्रूव होगी आउ सेटा को एथरक माने क्लियर कट से एलोकेट करछंती एवं फोकस देछंती डेटा गोटे आमर जो आपण मैंने जानती ओडिशा जमती स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया मिनरल रिच स्टेट तेणु आर जो मिनरल मूवमेंटा आपणकर बहुत बहुत जरूरी आम तापाई अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आम डेवलप करने कारण रोड रे कंजेशन अधिका हो जाऊँगी तेणु आमर रेलवे हो आपणकर इनलैंड वाटरवेज हो ये दुटा ओडिशा को आलोकेशन अधिक आसो एवं सेटा डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्टर मध्य मेंशन करिसेंती आम जदि देखा आमर उत्कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जोटा फोकस एरिया एमएसएमई सेक्टर पे मध्य स्पेसिफिक से कहते विभिन्न इनसेंटिव मेजर्स विभिन्न आउ जोटा कहते एसएमई ग्रोथ फंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज ग्रोथ फंड प्राय 10,000 कोटी टंकार से गोटे फंड क्रिएट कर एसएमई को सपोर्ट करने ताको इंसेंटिवाइज करे जमते हम टेक्नोलॉजी एडॉप्शन कथा कहूँ केमती एसएमई इजियर एंड चीप क्रेडिट केमती से माने पाई परिबे तांका हाथ को लिक्विडिटी आसी परियो तांका प्रोडक्ट को केमती से माने मार्केट करिपे तापई जेम जो हमर गवर्नमेंट रो ई मार्केट प्लेस रही ता संगे लिंक करने को प्रचेष्टा करा जाइछि एवं ग्लोबली कॉम्पिटिटिव भाव जमती मैं आगु कही तापई सब सपोर्ट जमती फंडिंग रे इजियर हम टेक्नोलॉजी एडॉप्शन पाई तांको मॉडर्नाइजेशन हवाई टू स्केल अप देयर प्रोडक्शन तापाई से माने केमती इजियर फंडिंग पाई परिवे इंसेंटिव पाई परिवे तापाई व्यवस्था है कॉर्पस फंड गोटे 10,000 कोटी टंकार भी तैयारी होती एवं तांको प्रोडक्ट को मार्केट करने पाई आहरी सरलीकरण कराई जेम सहित तांको लिंक करिकी तेणु सहीटा गोटे मेजर से जे आप देखा गले इंफ्रास्ट्रक्चर आ एसएमई ना आमर एमएसएमई ये दुईटा सेक्टर ओडिशा पाई बहुत इम्पोर्टेंट तापर विशेष ध्यान दि जापर मुझे टूरिज्म टूरिज्म गोटे माइनिंग मेटल सेक्टर को छाड़देला रेस्ट जो आसूँ आमर ओडिशा पाई बेसी जरूरी है टूरिज्म टेक्सटाइल एपरल सेक्टर जो थे कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो पार
तो टूरिज्म उपरे भी विशेष ध्यान दिज्व बोली फाइनेंस मिनिस्टर डायरेक्टली तापर कहते ओडिशा गोटे स्टेट 4-5टा स्टेट भीतर ओडिशा रही जे फोकस स्पेशल फोकस टूरिज्म ये ऊपर दिज्व गाइड से कहते जो गाइड मान को ट्रेन करा प्राय 10,000 गाइड को ट्रेन करेंगे जो मैंने कि फैसिलिटेट करेंगे टूरिज्म को जो मैंने टूरिस्ट आसवे आमर जो रही आमर ये टूरिस्ट साइट तार ताकू एक्सप्लेनेशन करने सुविधा हम ता छड़ा आपणकर टेक्सटाइल क्षेत्र में विभिन्न स्कीम अनाउंस कराई ओडिशा पे सेटा भी लाभदायक हम कारण ओडिशा फोकस करुच्ची टूरिज्म ना आमर टेक्सटाइल आपेरल क्षेत्र में स्पेशली टेक्निकल टेक्सटाइल तापर आमर ऑलरेडी 5टा टेक्निकल टेक्सटाइल पार्क गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा डिक्लेयर करते तेणु ताकू सपोर्ट मिले बजेट रे जो प्रोविजन करा ताकू छाड़ीदे आपणकर ओडिशा स्पेसिफिक जमती आमर एयर अर्थ ओडिशा रे मिलूची ब्रह्मपुर रे आम रिच एंड क्रिटिकल मिनरल्स तेणु सी मिनरल्स क्रिटिकल मिनरल्स केमती सहजरे मूव करिपारिव आम डिफरेंट सेंटर को तापाई गोटे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी करने कहुई एवं ओवरऑल आम कहवा जे आमर इकोनॉमी को किक स्टार्ट गतिशील करने एवं इकोनॉमी को आमको भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी आड़ को आगे नापी 2047 से जो विकसित भारत आम परिकल्पना करें पाखे पहुँचापी यहाँ गोटे उद्यम कराई ता छड़ा आम ओडिशा स्पेसिफिक स्कीम रही आम निश्चित भाव में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर अधिका पुश मिनरल ये माने तांकर जो कंसंट्रेशन तापरे आमर लॉजिस्टिक्स उपरे बहुत वाटरवेज एंड रोड एंड रेलवे नेटवर्क उपरे फोकस टूरिज्म उपरे फोकस एवं आमर टेक्सटाइल क्षेत्र में फोकस ता छड़ी धरे नेचुरली एग्रीकल्चर उपरे तो निश्चित भाव में सरकार का फोकस रही एग्रीकल्चर सेक्टर केमती अधिका जमती गोटे सेमती टेक्नोलॉजी की लेवरेज करी टेक्नोलॉजी यूज करके मल्टी क्रॉप डेवलपमेंट हम आमर लैंड रे जो गोटे सिंगल क्रॉप न होकि आम मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न रे आम जा क्लाइमेट को देखिकी एवं से आम जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक माने प्रोड्यूस हम ताको केमती आम एक्सपोर्ट करवा तापाई कंटेनर सर्विस को भी ध्यान दिया जाउची केमती कंटेनर सर्विसटा आहरी स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का मामला हो, चाहे वो फिशरी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो जल मार्ग के बारे में एक तरह से कारखाना से लेकर पूरी तरह जल मार्ग के परियोजना की चर्चा किया है और कई चीजें कैसे मेडिकल कॉलेज मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में आईसीयू और वहां पर पूरा ट्रॉमा सेंटर का यूनिट बनाने का निर्णय लिया है। इसलिए और मैं विस्तार से आपको बात आपके बीच में करूंगा, लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी को धन्यवाद देता हूं कि 2047 के भारत के लिए जो नींव आज उन्होंने रखा है, इसके लिए उनको बधाई देता हूं। मेडिकल आ गोटे जिन टूरिज्म संगे मेडिकल टूरिज्म उपर गोटे कारण हेल्थ सेक्टर को गोटे अधिका ध्यान दिखाई केमती प्राइमरी हेल्थ सेंटर ये आमर रूरल एरिया रे डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लॉक वाइज डेवलप हम एवं से बेटर केयर मिल पार स्पेशलाइज्ड केयर मिल पार तापाई भी ध्यान दिखाई एवं मेडिकल टूरिज्म केमती माने बढ़ावा जो हम लोग की जो इंडस्ट्री की मांग थी वो काफ़ी हद तक पूरी करता है और जो खासकर रिफॉर्म्स में कई सेक्टर्स को फोकस करना, एमएसएमईज़ को फोकस करना, सर्विसेज में भी नया फोकस उन्होंने दिया है और हर एक सोसाइटी के हर एक वर्ग को अलग अलग भागों में कर उनके लिए क्या कर रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छा था। और टैक्स में कई जो चीज़ें थी जो पहले से जो कई चीज़ें जो रेज़ करी जा रही थी
सिंप्लीफिकेशन के लिए वो भी उन्होंने काफ़ी हद तक सॉल्व किया। रेयर अर्थ मिनरल और कैपेक्स बढ़ा दिया है, इस ओवरऑल इसको किस तरह देखते हैं? एक्सपोर्ट को लेकर भी काफ़ी फोकस है। एक्सपोर्ट पे फोकस है, रेयर अर्थ पे फोकस है, कैपेक्स भी 1 लाख करोड़ से बढ़ाया है, तो वो भी बड़ा अच्छा है क्योंकि पहले भी अगर आप पहले से देखें तो 11 लाख करोड़ भी बहुत नंबर था। अगर आप 4 साल पहले से देखें तो ऑलमोस्ट डबल कर दिया, तो इस बार और 10-12% से बढ़ाया है। थैंक यू सर। So how do you look at the सरलीकरण को आमर डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स दुईटा जगह बहुत गुड़िया जिनस सरलीकरण आपन को जमती निजे इनकम टैक्स आप विदाउट सपोर्ट फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट आप निजे आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तापाई सरलीकरण कर अन्य जिनस जोटा आपंकर देखो जो असेसमेंट एंड पेनाल्टी प्रोसीडिंग दुईटा को मर्ज कर दिखाई एका थरके हम से ये भाव में आम गोटे देखा जदि ओवरऑल जो आमर बजेट्र जहाँ आम उपलब्धि कलु जे एटा गोटे संतुलित बजेट प्रोग्रेसिव बजेट एटा आमको आगु को विकसित भारत एवं समृद्ध ओडिशा हाँपाई निश्चित आमको गति जोगाइब मो वर्तमान माने स्पेसिफिक जदि सेक्टरल इश्यू उपरे आपण माने चाहिए आमर अन्य अच्छा पचारि पारे। टोटल एलोकेशन माने इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ द बजेट साइज तो किसी 12 लाख करोड़ आपंकर 12.2 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर एलोकेशन देते जोटा सी कहले हाँ हाँ से ई बसेस हाँ जोटा सी आमर सी प्लेन कथा आमर जोटा देखु जोटा आम कहूँ ब्लू इकोनॉमी आमर ओडिशा आम जदि सेपरेट आम सेग्रेट करिया मुझे आगु कही ओडिशा रे मिनरल सेक्टरटा हला प्रोमिनेंट सेक्टर व्हिच इज ड्राइविंग द इकोनॉमी ऑफ ओडिशा तापाई निश्चित भाव में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो पुश दिखाई एवं स्पेसिफिकली जो एथर नुआ जिनसटे कराई जो इनलैंड वाटरवेज को डेवलप करवा सीटा निश्चित भाव में आमको कारण आम 2030-32 सुधा 100 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस करने चाहूँ ताहले हमको 200 मिलियन टन आयरन ओर 200 मिलियन टन कोल मूव करा पड़ो तेणु तापाई आम कौटी रोड रे कंजेशन हम तापाई रेल नेटवर्क भी हमको डेवलप कर पड़ो स्पेसिफिकली कोल मूव करने हमको महानदी जो आमर तालचेर एरिया आमर इनलैंड वाटरवेज को डेवलप से आगुरी अप्रूव होता एलोकेशन कराई तेणु से गोटे बड़ उपलब्धि एथरक आप डिस्टिंग फ्रॉम अदर इयर्स तेणु से गोटे आमर बड़ उपलब्धि हम जोटा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तापर आमर मिनरल सेक्टर रे आमर जो स्पेसिफिक जो रेयर अर्थ कहते कारण क्रिटिकल मिनरल उपरे सरकार जोर दौरान आ रेयर अर्थ गोटे क्रिटिकल मिनरल से तार यूज रही तेणु ताकू केमती आमर गोटे मूवमेंट करी हब जो कंज्यूमिंग सेंटर गुड़ा को तापाई गोटे कॉरिडोर से कहते तापर आप फिशिंग उपरे जोर देते फिशिंग उपरे तेणु तापर आमको आमर जानते ओडिशा आंध्र प्रदेश पर फिशिंग रे आप मेरीन प्रोडक्ट उपरे द्वितीय राज्य जे कि एक्सपोर्ट मैक्सिमम करे तेणु तापर आपणकर जोर दिखाई एवं टूरिज्म उपर भी जो जोर दिखाई से ओडिशा बेनिफिट पाइब टेक्सटाइल क्षेत्र में जो जोर दिखाई से डायरेक्ट बेनिफिट ओडिशा को आसो तेणु आम देखा गले आमर जो आउ जमती आप जानती ई बस 5000 ई बस से मैंने ईस्टर्न इंडिया रे से मैंने चलैबे तादर ओडिशा पाखक निश्चित भाव में आलोकेशन आसो तेणु ओभरऑल आम देखा गले आम राज्य ओडिशा एथरक बजेट रे एडिक्वेट प्रोविजन करा
तो आम सबुठ बड़ कथा है एमएसएमई को ऊपर विशेष भाव थस दिखाई द्वारा आम निश्चित भाव में भाविया जे आमर ओडिशार जो मैंने बंधु मैंने अच्छा एमएसएमई क्षेत्र में से निश्चित भाव में तार लाभ पाइबे in terms of getting cheap and speedy funds or loans from the banks and गोटे separate dedicated fund 10,000 कोटी टंकार कराई एवं तांको मॉडर्नाइज करिया पई सेटार सुविधा आसीबो एवं तांको एक्सपोर्ट करिया पई बद जिम सहित जोड़ी दिया जाइछि तेणु आम देखियो कले मु जेंते कहूछि जे ओडिशा पई पूरा देश पई तो निश्चित भाव में यहाँ गति जगैब आम विकसित भारत आड़ को जावाई किंतु ता सहित ओडिशा पई मध्य निश्चित भाव में आमको एथिरे जहाँ जहाँ एथर प्रोविजन कराई जो डिटेल आसो आम जाना बट जहाँ आम चुंबक बुझीचु जे ओडिशा पई एथरक एडिक्वेट एलोकेशन आसी ओडिशा निश्चित भाव में एथरे बेनिफिटेड हम 10 रु आम आपको कहवा 8 नंबर दे परिबा सर को सर very balanced manner. For example, it has taken care of the youth, it has taken care of women, taken care of farmers, MSMEs, semiconductor industry, electronic industry, Ayurveda, our own traditionals, the modern industry as well as our traditional industries. So, since Indian Merchants Chambers, IMC Chamber of Commerce and Industry has a focus MSME membership, I would say what I like the most about is the 10,000 crore outlay over a period of 5 years for promoting and helping the MSMEs. So that's the most important point for me. The second one is the India Semiconductor Mission 2.0 and Philip to the electronic component manufacturing, and there the outlay of 40,000 crore. These two. The third one is Biopharma Shakti. So Biopharma Shakti, there is an outlay of 10,000 crore. Then I would say the fourth point is mineral-rich states, particularly, the dedicated rare earth corridor is being set up. That's an extremely important initiative. 5 is for decarbonization. All of us are suffering from the environmental catastrophes and all. So for decarbonization, the carbon capture and carbon utilization, 20,000 crore outlay has been given. Then capital expenditure of 12.2 lakh crore, which is a major initiative. And then we have women empowerment, because the women she-marts are being opened. So that's important one. And then I would say municipal bonds for ease of living in large cities. Municipal bonds can be raised. That will be important. And most importantly, fiscal deficit has been contained to 4.4% for 25-26 and 4.3% for 26-27, and custom duties have been rationalized. So these are my 10 points which are positive, big picture points for union budget for 25-26. So after union budget, market is down, BSE Sensex is down around 1700. What do you say? So I am not too much overly worried about the market going down in short term. It's largely because of the STT. And I think overall when the positive points of the budget will seep into the minds of various traders and all, market will take care of itself. So, but that's not the real objective of the budget, I would say. तो किस तरह से बजट को देखेंगे? अब बजट पेश किया गया है, तो बजट पेश किया गया, मैं इस तरीके से देख रहा हूँ कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है और इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ है, क्योंकि इसमें यूथ का ध्यान रखा गया है, हमारे यहाँ की महिलाओं का ध्यान रखा गया है, हमारे किसान भाइयों का ध्यान रखा गया है, और ख़ास करके जो MSMEs हैं, जो हमारे इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी कही जाती है, जहाँ 45% सप्लाई जो है MSME से आता है, इन सब का ध्यान रखा गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नई टेक्नोलॉजीज जो हैं, सेमीकंडक्टर हुआ, रेयर अर्थ
के रिलेटेड हो रहे हैं, तो उसमें जो आउटलेस दिए गए हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ हमारे भारत की जो ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ है आयुर्वेदा वगैरह, उसके अंदर भी आउटले बढ़ाया गया है। तो मिला जुला के ये बहुत अच्छा बजट है। बजट आने के बाद मार्केट नीचे गई है, 1700 पॉइंट डाउन हुई है, क्या मैंने जैसा कहा कि मार्केट का ऊपर नीचे होना बजट से डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं कहा जा सकता है, बट खास करके एसटीटी के ऊपर कोई बजट के अंदर अनाउंसमेंट नहीं है, शायद उसका ये रिएक्शन है। बट जब 1 या 2 दिन के अंदर मार्केट में इस बजट की अच्छाइयों का पता चलेगा तो मार्केट अपने आप उसका ध्यान रख लेगा। धन्यवाद। निर्मला सीतारमण 2026-27 आर्थिक वर्ष पर नवम केंद्रीय बजेट को उपस्थापन कर सारी। बजेट रे राजकोषीय घाट 4.3% रखा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर 12.2 लाख रखा। बजेट रे करदाता, निवेशक, कृषक, मध्यम वर्ग, उद्योग क्षेत्र पर बृहत घोषणा कराई। विदेश यात्रा पैकेज टीसीएस दर को 5 ରୁ 20% कमाई 2% रखा, जहाँ शिक्षा चिकित्सा उद्देश्य एलआरएस लागू होगा। इंटरेस्ट आम देखिए डीरेगुलेशन टा जो होची सेटा ओडिसा रे केमती रिफ्लेक्ट करछ, केमती सिंगल विंडो ऑपरेशन फॉर एमएसएमईज मान को फायदा दउची। सेकंड होची आमे दाबी करी आसुचु क्लस्टर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ओडिसा, सेटा केमिति आमे लाभ पाइबे, क्लस्टर भी समाने फोकस करिसंती। ओडिसा गवर्नमेंट क्लस्टर टा को बळी भाबरे रूपायन दउचंती। थर्ड होची कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स केतटा डेवलप होची सो दैट एमएसएमई माने फायदा उठेबे। आउ जो माने माइक्रो एंटरप्राइज अछंती कॉमन फैसिलिटी सेंटर टा निहाती दरकार। आउ डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज जोटा एसएमई माने फायदा उठेई परिबे, सेटा भी यूनियन बजेट रु से माने किछि अंश रे ताकू कन्वर्जेंस करिकि डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज को मध्ये जदि से माने डेवलप करंती आ मदर यूनिट्स को डेवलप करंती एति ओडिसा रे, ताले निश्चित भाव में एम्प्लॉयमेंट बढ़िबो एवं एमएसएमई मान को ग्रोथ हो। थैंक यू। टैक्स उपरे हमर सीए अछंती। हमर जो to fisheries, then TCS reduction on tourism packages and TDS reduction. So all these positives are there. Market is reacting the way it is reacting every day. So that is, I don't see any correlation of market that has tanked down, that has gone down to the budget proposal. हिंदी में जानना चाहेंगे, बजट पेश किया गया है, क्या विशेष पॉइंट्स हैं बजट में? विशेष पॉइंट बजट का ये है कि ये बजट एक 2047 की दिशा पाथ की ओर बढ़ता बजट है। अगला 8 बजट जो निर्मला जी ने पेश किया है वो 8 बजट एक के बाद एक एरिया। आम साथ जोड़ी आयुर्वेदिक डॉक्टर जोड़ी वासुदेव डॉक्टर वासुदेव प्रधान। डॉक्टर प्रधान, अखिल भारतीय संस्थान 3टा प्रतिष्ठा करा जिवो। आज केंद्रीय बजेट रे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण घोषणा करछंती। ये आयुष जदि हमें कहबा को केते दूर गोटे बड़ बोझ दबो? निश्चित भाव में स्वागत पदक्षेप। भारत हूँ आयुष चिकित्सार हूँ प्राचीन चिकित्सा जो तार मूल भूमि कह आद्य भूमि कह आज काश्मीर कन्याकुमारी चाहिए रही कि विश्वव्यापी होगा जाऊँगी। जोग जमी परिचित है एवं 3टी एम्स खोल तो स्वागत योग्य। मैंने अन्य कंट्री आग्रह ना विश्व आम जापारे भारत लोग जापारे अन्य कंट्री मध्य चाहिदा बहुत रही किंतु नेशनल लेवल इन्स्टिट्यूट खोलिले प्रभाव अलग रही कारण समस्त मन धारणा रही एम्स जो खोलुची तार गोटे किसी गुरुत्व रही। तेणु देखो दिल्ली में एम्स अच्छी आप खोलला, दिल्ली में आयुष एम्स खोलला, जामनगर खोलला। तेणु जब विदेश में खोल स्वागत पदक्षेप आयुर्वेद समृद्ध हम जो आप आयुष चिकित्सार समृद्धि कारण ये गोटे पार्श्व प्रतिक्रिया विहीन विज्ञान कौन कुप्रभाव ना गोटे जीवन को सुस्थ सबल सुंदर कर रखापी
भेदभाव को रखा आयुष हूँ एकमात्र चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को लेकिन आम जो परिचय सृष्टि विदेश में आहरी आहरी आगू आगू बढ़ निश्चित भाव में स्वागत योग्य पदक्षेप। डॉक्टर प्रधान ये जो घोषणा नुआ संस्थान गुड़िक जो हम ये आम देशर जो ग्रामीण और सहरांचल केते दूर प्रभाव पकेब? मैडम कहया कथा कौन कि आपंकर सहरांचल नहीं ग्रामांचल नहीं कोरोना पर समस्त आयुर्वेद मुहाँ युवक मुहाँ तेणु लोक चाहूँ आम कि सुस्थ भाव में बंचू कारण बर्तमान विश्वर जो जलवायु भल ना तेणु अनेक रोगर संख्या बढ़ी विभिन्न प्रकार भिन्न भिन्न स्वास्थ्य समस्या आसूची तेणु सहर गाँ सबुठी आग्रह बढ़ लोक धारणा था जे ग्रामांचल यार चाहिदा ना सहरांचल रही शिक्षित लोकों पाखे यार चाहिदा ता नुहे ग्रामांचल बंचिकी रही भारत भाया देश में ग्रामांचल लोक आयुर्वेद चिकित्सा को निर्भर कर रोचे कथा हूँ कौन आप सहर लोक शिक्षित लोक तो से मुहाई आयुर्वेद प्रति जे आम जो साइड इफेक्ट किसी ना ये ना सी ना से स्वतः आयुर्वेद को मुहाई कि यहाँ विदेश में गले कौन हम विदेश लोक चाहते आम ये आम कि निरोग बचू निरोग रू कौन करूँ तेणु ग्लोबाल हो गला कि सबुठ भल हम तेणु धनी गरीब किसी ना सहरांचल चलो ग्रामांचल भी चलो आउ ये विदेश को जाऊँगी मैंने गोटे इन्स्टिट्यूट गोटे कंट्रोल खोल मैंने से विश्वास है समस्त मुहाइबे से इन्स्टिट्यूट को आई तीन दिन अधिका हम तेणु प्रति कंट्री खोलवार आवश्यकता रही। डॉक्टर प्रधान ये जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद यार जो जो तीन स्थापना हम ये आयुर्वेदिक शिक्षा तार गवेषणा आउ तार विकास को केते दूर सहायता माने सहायता दे परिबो? उदाहरण आपंकर श्रीलंका आयुर्वेद प्रचार प्रसार है सरकार आग्रह देखी आम चिकित्सा को लोकप्रियता करने चाहिए तो बढ़ी तेणु आज केरल को नहीं विदेश लोक आस ट्रिटमेंट हाँपे तेणु से पहुंचे चाहिदा भयंकर चाहिदा बढ़ आज आयुर्वेद प्रति जो लोक मान धारणा था जो आयुर्वेद चिकित्सा भाव निजी जो गोटे पक्ष मन कर आयुर्वेद पाठ पढ़ुचे से दूरे ना कारण विदेश में जब यार चाहिदा बढ़ आग्रह देश भितर बढ़ तेणु यहाँ गोटे भल पदक्षेप कहीं देखुची रिसर्च भी हम गोटे जगार आपंकर सिलेबस चलो विदेश पिला चाहिए नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर में जो राजस्थान रही विदेश पिला पाठ पढ़ुं पढ़ाई आसुँच रिसर्च चली तेणु यहाँ गोटे ग्लोबाल है भल कारण भारतीय लोक मान गोटे विदेश मानसिकता रही हेल्थ सेक्टर को केते दूर सुदृढ़ करिवो डॉक्टर प्रधान? निश्चित भाव सुदृढ़ कर आपंकर सुस्थ जीवन यापन केवल आधुनिक चिकित्सा विज्ञान गोटे गोटे आयुध नुहे गोटे सुस्थ सबल निरामय जीवन यापन आधुनिक चिकित्सा सहित आपंकर आयु चिकित्सा आवश्यक आयुर्वेद आवश्यकता रही आम कंट्री जमी आप आयु सिस्टम जोड़ी दि जाए एलोपैथ मॉडर्न सिस्टम सहित पीएचडी मेडिकल कॉलेज में से खोलला मैंने आगे बहुत आगु आसती आधुनिक चिकित्सा ना तेणु सी कंप्यूटर हो मुहाइबे चिकित्सा से बहुत मॉडर्न साइंस आगु आसती जब आयुर्वेद से पहुंचला आयुर्वेद कौन कौन शिल्प रिसर्च तुलसी गोटा कौन थंडा काश तो अधिक गवेषणा कर कहीं सब से यूज हो हल्दी गोटे आप आंटीसेप्टिक कहीं निहाई बहुत आगुरी तेणु रिसर्च हो पार बहुत मैंने विदेश लोक मैंने ब्लाइंड नियंत्रण हूँ रिसर्च गोटे अनुशीलन कर मानसिक रही बढ़ी पार आयुर्वेद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रधान आम साथ रही आयुष डाक्तर रही डॉक्टर वासुदेव प्रधान एवं जो भाई तीन नुआ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद स्थापना ने घोषणा करा कंसंट्रेट पुनः किया गया है। फार्मिंग की अगर बात करें उसमें जिस तरीके से डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज किया गया है, नहीं तो आप उसी को एक ही उत्पादन बार बार रखने की भी समस्या सरकार के पास इवेंचुअली होने लगेगी। तो कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए कोकोनट, कोको, इन तमाम चीज़ों को जिस तरीके से बजट में रिकॉग्नाइज किया गया है, फिशरीज़ को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके उस सेक्टर को एनहांस करने की बात हो, मैं मानता हूं कि ये 47 विकसित भारत के निर्माण के लिए उसकी एक मजबूत नींव को तैयार करने वाला एक बहुत ही विजनरी बजट है। और इसकी खासियत ये भी है कि 9वीं बार वित्त मंत्री जी ने इस बजट को पेश किया है। खासियत तो ये है कि उन्होंने 9वीं बार किया है, बट एक ही प्रधानमंत्री के अंदर उन्होंने 9वीं बार किया है। ये कंटिन्यूटी दिखाता है, स्टेबिलिटी दिखाता है सरकार की सोच में, सरकार की नीतियों में, जो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर भी हमारी पहचान को मजबूत करता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को हम लोगों ने मजबूती देने की इसमें बात की है, और ईज़ ऑफ बिजनेस के साथ साथ ईज़ ऑफ लिविंग पे
इस सरकार का, हमारी सरकार का बल रहा है। रिफॉर्म एक्सप्रेस का जिक्र मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते रहे और रिफॉर्म्स के माध्यम से जितना सरलीकरण हो सकता है सिस्टम का वो करने का प्रयास किया। आज के बजट में भी आप देखें जिस तरीके से पहले के बजट और आज के बजट में समझने के लिए ज़्यादा था, चीज़ें ज़्यादा समझ में आ रही थी। पार्ट ए पार्ट बी जिसका जिक्र मैं सुबह से कुछ न्यूज़ चैनल पे भी सुन रहा हूँ, जिस तरीके से उसको भी इक्वली बैलेंस किया गया है ताकि सही में जो टेक्निकल पक्ष भी है उसको भी जनता तक सही ढंग से पहुँचाया जाए। तो मैं मानता हूँ कि ओवरऑल ये 2047 को मद्देनज़र रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया और इसके लिए मैं मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से माननीय वित्त मंत्री साहिबा का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, युवा of time. Thank you. होने वाला है कंटेंट क्रिएटर्स के आत्मसम्मान का ये बजट है और उनको रिकग्नाइज़ किया गया है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक और दूरदर्शी बजट है। सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, महिलाओं को भी ट्रेन करने के लिए बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की गई है। पहली बार किसी बजट में मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दिया गया है। मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जाने वाला है। तो डेफिनेटली ये बहुत ही रोबस्ट बजट है, होलिस्टिक बजट है और आने वाले समय में जो बोल्ड रिफॉर्म्स का हम लोग बात करते हैं, समाज के इंक्लूसिविटी का बात करते हैं, ये बजट उसकी जो नींव है उसको रखा है। लेकिन जैसे ही मैम का स्पीच खत्म होता है, निर्मला मैम का जो सेंसेक्स है 2000 पॉइंट नीचे चला आता है, इसको आप कैसे बोलते हैं? ऑल ऑफ सडन मैम जस्ट लास्ट 2 days रू वेबसाइट भी आरंभ हो जाइए। सो डिस्प्यूट विल बी नाउ छोटो टैक्स पेयर को हाईकोर्ट जीवा को पड़ो नहीं एंड दे कैन रिजॉल्व इन ट्राइब्यूनल विथ वेरी लो एंड मिनिमम कॉस्ट। So income tax point of view and GST point of view and custom, lot of rates transformation and tobacco industry रे गोटे transformation from today implement करा है। As you asked me earlier, what was most important is fiscal. शुणुले बजेट आसवा पर प्रतिक्रिया विभिन्न क्षेत्र आसबार लगी सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ जो कथा सामना को आसूची जे ओडिशा को एथिरे जो केतोटी घोषणा करा जायछि सीधा सड़क ओडिशा को जो फायदा पहुंचबो जो कथा आपण माने टीवी स्क्रीन में देखि पारुछंती। ओडिशा पई जो भली भाबरे जो विरल खनिज कॉरिडोर बा विरल मृत्तिका कॉरिडोर जो प्रथम थर पई भारत में प्रतिष्ठा होगापी जाऊँगी केरल आंध्र ओडिशा को लेकिन ओडिशा यह द्वारा विशेष भाव में लाभान्वित होगाकू जाऊँगी। एवं द्वितीय कथाटी जो अर्थमंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण घोषणा करिसेंती जे राष्ट्रीय जलमार्ग धामरा एवं पारादीप बंदर सहित जो खनिज अंचल गुड़िक रही ओडिशार से खनिज अंचल गुड़िक जोड़ा खास कर रोचे तालचेर अनुगुल जो खनिज अंचल रोचे जलमार्ग अर्थात नदी पथ देकी पारादीप एवं धामरा सहित जोड़ा अर्थात जो रोड ट्रांसपोर्ट रे ट्रैफिक से अधिक खर्च आसूची अति सहजरे कम समय एवं बिना ट्रैफिक जाम रे खनिज पदार्थ सीधा सड़क पारादीप एवं धामरा बंदर पर्यंत पहुंची पारिबो। कलिंगनगर एवं अनुगुल तालचेर सहित पारादीप एवं धामरा को जोड़ा जावा ये गोटे बहुत बड़ा पदक्षेप। ये वर्तमान जदिओ कथा नुहे किंतु एटी घोषणा करा जायछि स्पष्ट भाव में बजेट रे मोदी सरकार आसिबा परठारु या ऊपर काम आरंभ करथिले एवं घोषणा होइतिला से नेकी सर्वे मध्य करा जायतिला किंतु काम जदिओ चूड़ांत रूप नहीं पारि नाही किंतु ए बजेट रे स्पष्ट भाव में घोषणा करा जायछि जदि एटा होउछि ताहले एटा ओडिशा पई बहुत बड़ा गोटे लाभ कुआ जाय परिबो कारण अनेक एकाधिक लाभ या द्वारा मिल। प्रथम कथा जो खनिज ट्रांसपोर्ट होउछि बा परिवहन होउछि बंदर गुड़िकू एवं सड़क मार्ग रहबा द्वारा बहु परिमाण में ट्रैफिक जाम होउछि एवं ट्रक गुड़िक व्यापक भाव में चलाचल करबा द्वारा ट्रक हो बा ट्रेन हो एवं ट्रेन रूट गुड़िक मध्य बिजी रहुछि। खास करी राजमार्ग रे जो परिवहन होउछि राजमार्ग रे परिवहन हवा द्वारा अधिक समय लागुछि एवं या द्वारा परिवेश प्रदूषण होउछि ट्रैफिक जाम होउछि दुर्घटनार आशंका मध्य बढ़ुछि खर्च अधिक रहुछि। किंतु जल मार्ग रे जदि ये परिवहन हम या द्वारा अनेक फायदा मिलिबो। एक तो कम समय मध्य पहुँचब
रोड जाम हब नहीं, सस्तारे पहुँचब, कम खर्च हब, परिवेश प्रदूषित हब नहीं। तो ये बजेट रे घोषणा करा जायछि स्पष्ट भाव में जो 5टी जलमार्ग विषय घोषणा करा जायछि एवं ता भितर ये होछि रहिछि गुरुत्व वहन करुछि धामरा एवं पारादीप सहित खनिज पदार्थ भरा जो अंचल गुड़िक रही ओडिशार ताकू संजोग करा जिवो जलमार्ग माध्यम रे एवं से भली भाव में विरल मृत्तिका कॉरिडोर जो स्थापन करा जिवाकू जाउछि केरल आंध्र ओडिशा ए राज्य गुड़ी को लेकिन जो कॉरिडोर स्थापन हवा और से कॉरिडोर रे ओडिशा जेहेतु आसूची एवं से क्षेत्र में मध्य ओडिशा बड़ा लाभान्वित हवाकू जाउछि। एवं सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा होछि जे अनेक गुड़िए जो भली भाव में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सेमीकंडक्टर 2.0 को लॉन्च करा जायछि एवं आपण जानि छंती जे ओडिशा रे सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अनेक गुड़िए पुंजीनिवेश होइछि एवं जितेबाला एक लॉन्च करा जायछि सीधा सड़क ओडिशा या द्वारा लाभान्वित हवाकू जाउछि। प्रथम थर पर 3टी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद प्रतिष्ठा नहीं घोषणा करा जायछि जेमती जो ढांचार ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस अच्छी एम्स अच्छी जार गोटे शाखा भुवनेश्वर में रही एवं से भली भाव में देश में 3टी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद प्रतिष्ठा करा जिबा अर्थात आयुर्वेद को गोटे बड़ मान्यता या माध्यम रे मिलवा को जाउछि एवं आयुर्वेद को नहीं ओडिशा जो भली भाव में मेडिकल टूरिज्म क्षेत्र में गोटे बड़ डेस्टिनेशन बनी सारी एवं आगु को आहुरी बनवा को जाउछि एवं ये जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद प्रतिष्ठा होगा जाउछि एटा आहुरी बड़ प्रोत्साहन करिवो आयुर्वेद प्रचार प्रसार दिगरे बहुत बड़ पदक्षेप एक कहा जाई परिबो। तो अनेक गुड़िए घोषणा करा जायछि तो टिकेस कथा जो देखा डायरेक्ट टैक्स कथा जो देखा जो कि इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स रे अनेक गुड़िए रिहाती जदिव गत बजेट रे बहुत बड़ा बंपर रिहाती देखा मिलता है एथर टैक्स रे भी रिहाती खासकर वरिष्ठ नागरिकों कथा जो देखा वरिष्ठ नागरिकों को बजेट रे टैक्स रिहाती मिली जो स्टैंडर्ड डिडक्शन रही जो परिमाण थिला सेटा को 1 लाख टंका को वृद्धि कर दिया जायछि स्टैंडर्ड डिडक्शन रो परिमाण को 1 लाख टंका को वृद्धि करा जायछि आ शिक्षा ऋण एवं 10 लाख टंका पर्यंत वैदेशिक अर्थ प्रेरण उपरे लागिबो नाही कोनोसी टैक्स अर्थात जो माने विदेश रे शिक्षा नवा पाई चाहूचंती तांका पाई ये गोटे बहुत बड़ा रिलैक्स एठी कहा जाई परिबो टैक्स क्षेत्र रे 2टी निजस्व संपत्ति क्रय उपरे टैक्स रिहाती रहिछि जो माने संपत्ति क्रय करूछंती एवं सेठी जो टैक्स लागुथला पूर्वरु सेटा कमे दिया जायछि तो यह द्वारा अधिक किणा बिका हो पार यह द्वारा लोक मान को प्रोत्साहित कर रियल इस्टेट सेक्टर को सीधा सड़क भाव में प्रोत्साहित कर टिकस रिटर्न फाइलिंग समय सीमा 4 वर्ष को वृद्धि कर दिया जायछि वार्षिक 12 लाख पर्यंत आय उपरे कर संपूर्ण छाड़ एवं 12 लाख पर्यंत एवं तापर जदि 75,000 जो डिडक्शन करा जायछि एवं ताकू मिसई देले 12,75,000 पर्यंत कोनोसी टैक्स दबाकू पड़िबो नाही जो माने 12,75,000 पर्यंत जो मानकर आय सीमा रहुछि दरमा भोगी कर्मचारी स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 को वृद्धि करा जायछि तेणु ये जो दरमा भोगी जो माने वेतन भोगी जो माने रहिछंती 12 लाख से पाइले सीधा सड़क आयकर उपरे एवं स्टैंडर्ड डिडक्शन उपरे 75,000 एभली भाव में 12,75,000 पर्यंत आयकर रे कोनोसी टैक्स दबाकू आय उपरे कोनोसी टैक्स दबाकू पड़िबो नाही अर्थात जदि हमें देखिबा 1,06,000 पर्यंत जदि आपणकर मासिक आय अच्छी वेतन आपणकर दरमा अच्छी आपण सरकारी क्षेत्र में थांतु बा घरोई क्षेत्र में थांतु 1,06,000 टंका पर्यंत जदि आपणकर वेतन रही दरमा रही आपण को कौनसी टैक्स बा टंकाटीए हेले भी टैक्स दबाकू पड़िबो नाही। तो ये होची गत बजेट रे अवश्य एने की बड़ घोषणा कर सारी तेणु
ये बजेट पुराना जो नुआ टैक्स घोषणा करा जायतिला जहार संपूर्ण फायदा ए वर्ष ठारू जो माने वेतन भोगी रहिछंती सेमानकु संपूर्ण रूपे मिलिबा को जाउछि अर्थात आयकर कौनसी प्रकार आउ आयकर जो माने लक्षे 6000 टंका पर्यंत जो माने मासिक आय करूछंती सेमानकु टंकाटी हेले भी बा आयकर दबाकू पड़िबो नाही। Or states, or there is in a way all positive things are there, even on the direct tax or net tax, that if there are any opportunity for simplifying, then if there are any request for certain flexibility to file the returns, or if there are any undisclosed assets or domestically absorbed, then NRIs can invest more than up to 24% in the portfolio management. So some of the measures brought in all these area in turn will be studied by the market, and the market will appreciate the budget. Take care. Was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research and manufacturing. To enhance domestic chemical production and reduction import dependency and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route on a cluster-based plug-and-play model. आपण शुणुले जो भाव में अर्थमंत्री घोषणा कर जो 3टा क्षमा करेंगे जो कॉरिडोर जो हवा जाऊँगी रेयर अर्थ कॉरिडोर बा विरल मूर्तिका कॉरिडोर 3टी राज्य को लेकिन केरला ओडिशा आंध्र को लेकिन हवा जाऊँगी खनिज संपद रे जो भरपूर राज्य गुड़िक अच्छा जहाद्वारा जो माइनिंग सेक्टर को बहुत बड़ा लाभ मिलवा जाऊँगी सीधा सड़क भाव में ओडिशा द्वारा लाभान्वित हवा जाऊँगी। तो आम जीवा आम सहित सोनपुर जोड़ी होती डॉक्टर हमीद हुसैन वरिष्ठ कांग्रेस नेता आम सहित जोड़ी होती आपण को स्वागत करुच्ची। डॉक्टर हमीद हुसैन आपणकर प्रतिक्रिया नवाक चाहिए ये बजेट को लेकिन। दे बजेट देखो तो भारी हतोत्साह जो हिसाब से माहौल क्रिएट करागला कहला एक्सप्रेस बजेट आत्मनिर्भर बजेट विकसित बजेट विकसित भारत विजय बजेट ये सब जहाँ देखला बर्तमान देखला बिल्कुल एक्चुअली इंटेलेक्चुअल बैंकक्रप्ट से जना पड़ुछि कौन सी इंटरेस्टिंग नुह बोरिंग बजेट स्वादहीन बिल्कुल एब्सोल्युटली कौन सी न्यू वाइन कहते ओल्ड वाइन न्यू बोटल कहते से भाई कौन सी माने कौन से स्ट्रक्चरल चेंजेस ना मु अनुमान करी से डिफेन्स बजेट गोटे परिवर्तन आने कहीं ऑपरेशन सिंदूर पर आम जो चाइना सपोर्ट कला इलेक्ट्रिक एंड सैटेलाइट सपोर्ट कला एवं आमर फाइटर प्लेन्स अपग्रेडेशन हम
आमर एयरफोर्स अपग्रेडेशन हम एआई अपग्रेडेशन हम सहीटा ना है। द्वितीय कथा फार्मर शिशुटा भी बिल्कुल आड्रेस करना केवल मत्स्य पालन नारियल पालन नारियल तार केमी प्रोत्साहन कर जना पड़े साउथ इंडियन आ नॉर्थ ईस्ट बजेट कहीं बर्तमान तमिलनाडु केरला एवं आपणकर आसाम रे इलेक्शन होबार अच्छी से बजेट पाई विशेष किसी आमर माने जाने आम जो कहते आप ओडिशा जे आम कौन वेयर हाउसिंग तैयारी करवा मिनरल करवा मिनरल आमको केते मिलूँ मिनरल आमको 10% आज भले आप 100 टंकार मात्र 10 टंका मिलूँ सेटा भी से मिलूनी बहुत गुड़ा चोरी हो तो मिनरलटा जो अच्छे आप देखो झारखंड छत्तीसगढ़ ओडिशा एते मिनरल रिसोर्सेस थी आप पूरा यूरोप मिनरल रिसोर्स पर डिपेंड करके इंडस्ट्री पर उन्नति करुँच आम बहुत पछरे अच्छे बैकवर्ड स्टेट्स कहीं खाली मिनरल एक्सप्लोटेशन होता छड़ा और कौन जिन ओडिशा को दिखाई मुझे देखो आप मिलिट्रीटा बजेटा बढ़ार था कहीं आप देखो गोटे जिन कही दिए आमर पाखे 4.5 जनरेशंस फाइटर प्लेन्स डिफेंस जो एक्सपेंडिचर जोटा कि गत बजेट रे थिला 5.68 लाख करोड़ सेटा 5.94 लाख करोड़ को वृद्धि होईछि। शुणु तो प्रपोर्शनेटली वृद्धि होईछि आपण जो पैसाटा देखुछंती किंतु बजेट ओवरऑल बजेट रो केते परसेंट आमर से हिसाब रे कोनोसी वृद्धि हैनी। द्वितीय कथा आपण मुद्रास्फीति होउछि से आप कौन से वृद्धि ना परसेंटेज वाइज देखो परसेंटेज देखो टोटाल बजेट केते परसेंटेज लक्ष पक्ष लक्ष्य देखो नहीं से परसेंट आपको 15% बजेट हवा कथा 13% खंडे बजेट होता भी कम होती पारे। पाकिस्तान बजेट 25% बजेट पूरा डिफेंस को दौरान चाइना देखुना केते खर्च करमर 3 गुण खर्च करमको से कपअप करा पड़ो। आप देखो तो अरुणाचल प्रदेश आम 2000 किलोमीटर बीजेपी एमपी तापिर गाँव कहते बसी आस चाइना आमर 65टा पोस्ट लद्दाख अच्छे आम 18टा पोस्ट चाइना कैप्चर कर सारे से निजे आपंकर एसपी प्रधानमंत्री अजित डोभाल एवं अमित शाह को रिप्रेजेंटेशन से प्रेजेंटेशन कही तो आम डिफेंसटा को आप स्ट्रंग करवा था। डिफेंस मिनिस्टर डायरेक्टर थी से जानी मुझे एग्रीकल्चर मिनिस्टर डायरेक्टर थी एग्रीकल्चर आप मत्स्य पालन पशुपालन सहित किसी कराई जोटा अच्छी केवल पुनर्वता करा आप मेन क्रॉप हो कौटा आप पैडी क्रॉप राइस क्रॉपटा धान आप गहम मका एवं आपणकर आखु चाष या कौन कहना कि ना एमएसपी कथा ना वृद्धि कर कथा नहीं सब्सिडी विशेष किसी ना फर्टिलाइजर समय आसी आम पारंपरिक से चाषरू हटिकी आम अर्थकारी फसल आड़ को जा जो ऊपर से फोकस करछंती काजू चाष वालनट चाष एवं नड़िया चाष उपकूलवर्ती राज्यगुड़ी को स्वतंत्र भाव में प्रोत्साहन दिज्व से पैकेज घोषणा करा जायछि। उपकूल राज्य भाव में ओडिशा या द्वारा लाभान्वित हेबनी आपण भाई पारना ना शुणु आप जो कथा कहते बिल्कुल एग्री कर मॉडर्नाइज कर मॉडर्नाइज हेल्ले कौन मेकानाइजेशन मॉडर्नाइजेशन फार्मिंग होगा कथा फार्मिंग चेंज करवा कथा आप अधिकांश लोक आप जो धान चाष परिवा चाष आपणकर आखु चाष मेज चाष व्हीट चाषटा से मेजर फोकस ना तार जो इनकम बढ़ो लोकंर सारा भारत वर्ष बढ़ो नड़िया आम जो माछ कथा कहते केवल पेरिफेरियल होची बेसी किसी तार विशेष किसी प्रभाव पड़ोनी आम जो आप मॉडर्नाइजेशन कथा कहते आम निजक परिवर्तन करने कथा कहते फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वैल्यू इंडस्ट्रीज को मजबूत करने कथा कौटी कौन गोटे स्कीम ना प्रत्येक स्तर में आप देखो आम देखो आलू बिक्री होची 20 टଙ୍କା कि 30 टଙ୍କା किलो कि चिप्स तैयारी कला बेलू तार मूल्य हो 200 टଙ୍କା से वैल्यू एडिशन कर टमाटो केचप गोटे केजी टमाटो केचप तैयारी कले 80 टଙ୍କା 100 टଙ୍କା बिक्री होची तो वैल्यू एडिशन करने परिवर्तन करने विजन ना नहीं आप जो कथा कहते एकदम मुझे सहमत डॉक्टर हमीद हुसैन जे केवल फूड प्रोसेसिंग यूनिट उपर अधिक फोकस रहा दरकार और आप जानते जी जे विगत जो होता मेक इन ओडिशा कनक्लेव जो होता से जो भाई भाव में फूड प्रोसेसिंग उपर गुरुत्व दि जाता है केते गुड़े ग्राउंड रे तार काम आरंभ हो जाए नयगढ़ में आप जानते हैं अन्य केतेक स्थान में फूड प्रोसेसिंग उपर जो पारंपरिक जो इंडस्ट्री बा माइन्स मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री को छाड़ी बाकी किभली भाव में इंडस्ट्री गुड़िक उपर फोकस करा सरकार गुरुत्व देइछंती अधिक आवश्यकता रही नो डाउट किंतु आपण को लगुनि जे सही चिराचरित धान आखु भितर आम सीमित न रही आम आगू को बढ़ा और या गुरुत्व देवार आवश्यकता रही। मत पचारुचंते एक्जाक्टली आपन को डॉक्टर हुसैन हाँ देखो तो ठीक बुझ नहीं आप धान चाष गहम चाष आम ऊर्ध्व आसिक कैश क्रॉप जावा कथा से जमी कैश क्रॉप कौन करवा हर्टिकल्चर करवा हर्टिकल्चर कौन व्यवस्था नुआ व्यवस्था है कि
हॉर्टिकल्चर जूस तैयारी करवा कथा कि आपण आचार तैयारी करवा कथा जो प्रोसेसिंग कथा हवा कथा से करूना आप सबु जमीन आप गहमीर हो पार भेजिटेबल चाष हो पार हॉर्टिकल्चर चाष हो गुरुत्व देवा कथा चिराचरित धान और गहम आमको परिवर्तन होगा कथा मुझे जानी कि से कौन मेडिसिन प्लांट्स हो कि आपंकर भेजिटेबल्स हो एवं फूड प्रोसेसिंग जो जिनिस गुड़ाक अच्छी युड़ाक या कथा सो सेटा है फोकसटा ना आप जिते मेकानाइज मॉडर्नाइज करेंगे ना एवं जिते फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड आपंकर वैल्यू एडिशन इंडस्ट्रीज करें ताल किसी उन्नति करना द्वितीय कथा कहूँ से दृष्टि मुझे कहूँ से परिप्रेक्षी में जे मिनरल्स भी आम मिनरल्स एक्सप्लोर करके बिक्री हो कि लुहा तैयारी होची अरे आम साइकिल कहीं मोटरसाइकिल कहीं नहीं इक्विपमेंट्स कहीं तैयारी करवा नहीं आम पाखे खनिज पदार्थ अच्छे आम पाखे लुहा अच्छी आम पाखे आयरन स्टील होची आम पाखे मैंगनीज अच्छी आम पाखे कोयला अच्छी आम पाखे सब मुझे एकदम सहमत आप सहित केवल आम खनिज उत्पादन करवानी खनिज पदार्थ को लेकिन जो एक्सिलरी इंडस्ट्री हवा कथा से इंडस्ट्री ये स्थापन हमार आवश्यकता रही डॉक्टर हमीद हुसैन ये बजेट को नहीं आउ गोटे कथा आपंकर प्रतिक्रिया नाक चाहिए जे जो ओडिशा को लेकिन जब जो घोषणा कथा कह आउ गोटे बड़ घोषणा होची जो वाटरवेज नेशनल वाटरवेज एवं ताकू नहीं कि जो दुईटा बंदर आमर रोचे धामरा और पारादीप बंदर सहित जो खनिज पदार्थ एरिया गुड़ी को ता सहित कनेक्टिविटी करा वाटरवेज मध्यम जलमार्ग मध्यम नदी रे कनेक्टेड हम तो ये घोषणा को आप केमती देखुं ओडिशा या द्वारा केमती लाभान्वित हो पार ना आपंकर मन में या भी संदेह रही आशंका रही ना सीड अच्छे आशंका मुझे कहूँ देश आप गोटे कॉलोनी हिसाब से आमको ओडिशा ट्रीट करवा कथा नहीं जे माइंसटा एक्सप्लोर करवा एवं से कंपनी मैंने नहीं पलांतु अडानी हो अंबानी हो जे भी हो कि आप जो रूमटा हो जो कंपनी नहीं एक्सपोर्ट करते व्यवस्था कर से एंसिलरी इंडस्ट्री पाखे मयूरभंज केउझर सुंदरगढ़ में आप सुकिंदार युड़ाक माइंस गुड़ाक अच्छी जो गुड़ाक अच्छे से गुड़ा कहीं डेभलप करना इवन आपंकर आलुमिनियमटा अच्छे आपंकर आदित्य बिर्ला गलानी नाल्को अच्छी साउथ में कोरापुट मलकानगिरी कोरापुट अच्छी तो युड़ाक एंसिलरी इंडस्ट्रीज डेभलप करके से एंसिलरी इंडस्ट्रीज को आप प्रोडक्ट्स का पढ़ातु मु आपको कहूँ छोटिया कथा मुझे आम दादन खटिया जाऊँ मोर लोक ये जबार किसी असुविधा नहीं किंतु डॉक्टर हो जातु नर्स हो जातु शिक्षक हो जातु प्रोफेसर हो जातु आम कौन से मजदूर हो से भाया जदि खनिज पदार्थ आम जीव खनिज पदार्थ जन जाऊ आमर फिनिश प्रोडक्ट तैयारी करूँ ये जिते घर जिन आप देखिए कौन सी जिन टेबल चेयर ठू नहीं आपंकर साइकिल अच्छे मोटरसाइकिल अच्छे घर इक्विपमेंट्स अच्छे लुहार एत बहुत दिन तैयारी होती इनफ्रास्ट्रक्चर तैयारी होती से गुड़ा प्रोड्यूस करके आम एक्सपोर्ट करेंगे किसी असुविधा नहीं आमको तो पैसा दरकार फर्स्ट कथा द्वितीय कथा मुझे कहना चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट शुड टेक ए व्यू कि जो 100 टका आप जो मिनरल रिसोर्स नौ 25 टका अति कम प्रदेश को मिलवा कथा जदि मिनरल रिच स्टेट्स मैंने से हिसाब से पाउना पाते जो रॉयल्टी मिलवा कथा से हिसाब से जो 10% आठ भल मिलूँ से न होकर 25% हेल्ले आम के उन्नति करता आमर केवल झारखंड छत्तीसगढ़ ओडिशार केवल एक्सप्लॉयटेशन होची ये जो हमरा जो वाटरवेज भी करें आप कहीं केमी खनिज पदार्थ एक्सपोर्ट होकर ऑस्ट्रेलिया को पढ़ो चाइना को पढ़ो क्या कौ देश को पढ़ो दैट इज द वे यू आर डेवलपिंग द स्पोर्ट्स एंड पोर्ट्स सब दखल कर सारे डानी बाबू तो इट इज अ मोनोपोली ऑफ एक्सप्लॉयटेशन हम देखिए आप डॉक्टर हमीद हुसैन आसबि आपण पाखु आम सहित जोड़ी होती स्टूडियो जोड़ी होती अनिल विश्वाल आम सहित जोड़ी होती भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता अनिल बाबू आपन को स्वागत करुच्ची जो कथा ये निजर प्रतिक्रिया रखुले कांग्रेस वरिष्ठ नेता डॉक्टर हमीद हुसैन जे ये जो घोषणा गुड़िक जे खनिज कॉरिडोर कथा हो बा जो रेयर अर्थ कॉरिडोर कथा हो बा ये वाटरवेज कथा हो धामरा एवं पारादीप सहित जलमार्ग कनेक्शन जो आम खनिज अंचल गुड़ी तो या केवल ओडिशारू खनिज पदार्थ लुटिबा उद्देश्य किंतु या द्वारा ओडिशार विशेष किसी लाभ हम ना मु तो अधारू शुणिली स्टेटमेंट मु भावुँ से बोधे कन्फ्यूज अच्छा कन्फ्यूज कौन से कहले जे आमर एठी फिनिशिंग प्रोडक्ट तैयारी हो मैन्युफैक्चरिंग हब हो किंतु मैन्युफैक्चरिंग हब बा फिनिशिंग प्रोडक्ट इन्वेस्टर केतेबेले आसीबो जेतेबेले आपण ताको इन्फ्रास्ट्रक्चर जोगै देबे ताकर लॉजिस्टिक खर्च कमै देबे कम्युनिकेशन दृष्टि पोर्ट सांगे अन्य नोडाल जो पॉइंट्स अच्छी ता सहित आप कनेक्टिविटी देवे एवं जो कथाटी इनलैंड वाटरवेज कथा कहुई ये इनलैंड वाटरवेज तो बहुत वर्ष है प्रपोजाल थिला अनेक सरकार समय अनेक देश माने देश अनेक जगार थिला तो जो मैटरलाइज हो गोटे आइडियाटा को गोटे क्रिटिसिजम करके गोटे नेगेटिव व्यू दबा
जे माइनिंग मिनराल रिसोर्सेस लुट हो जाऊँगी मु भावुँ कौट ना कौटी टिके कन्फ्यूज अच्छा बा टिके ग्रहण करना सकारात्मक जिनसटू ड्यू टू पॉलिटिकल कंपल्सन आउ द्वितीय पॉइंट जो ओडिशा को कहुई रेयर अर्थ कॉरिडोर तैयारी होबो देखो रेयर अर्थ हूँ फ्यूचर आज समय विश्वर इकोनोमी सेंटर ठिया जमती दिने ग्लोबल पॉलिटिकल डायनामिक्स को पेट्रोकेमिकल बा पेट्रो नियंत्रण करूला एबे रेयर अर्थ हूँ फ्यूचर एनर्जी सोर्स एवं जितेबाला सरकार गोटे पदक्षेप नौकरी रेयर अर्थ को डेवलप करने और रेयर अर्थ कॉरिडोर रे ओडिशा को रखुंट मु भावुँ जड़े हिसाब से ओडिशार अर्थनीति को आगू को नबार विश्वास करथिबा नीति लोक हिसाब से स्वागत करने कथा एवं रेयर अर्थ हेले कौन हम रेयर अर्थ हेले ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब कंपनी आसी पारिबे रेयर अर्थ हेले सोलार मैन्युफैक्चरिंग पैनल मैन्युफैक्चरिंग यार सेंटर हो पारिबो एवं जदि रेयर अर्थ रे आमे डिफेन्स रो हो सेमीकंडक्टर रो दुईटी ग्राउंड ब्रेकिंग ओडिशा सरकार करिसेंती दुईटी सेमीकंडक्टर हब माने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करबा पई सेथि मध्य रेयर अर्थ गोटे रॉ मटेरियल प्राइमरी रॉ मटेरियल तेणु ये जो दुईटी बड़ डिसीजन गोटे है रेयर अर्थ आ गोटे है इस बजट में 3 मुख्य विजन हैं रफ्तार क्षमता सबका साथ। रफ्तार का अर्थ है प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक विकास की गति को तेज करना। क्षमता का अर्थ है लोगों की काबिलियत को निखारना ताकि वे देश की तरक्की में भागीदार बन सकें। और सबका साथ का अर्थ है कि हर परिवार क्षेत्र के पास कमाई के पर्याप्त संसाधन और मौके हों। ये सबका साथ का अर्थ है यह बजट सबका साथ सबका विकास की भावना को ये चितार्थ करने वाला ये बजट है। मैं इस कल्याणकारी बजट के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। उनका हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं। यह बजट आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में मील का पत्थर है। साथियों, भारत ने खुद की मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाई है। मुझे खुशी है कि इस बजट में जिससे विदेशों से सामान मंगाने की निर्भरता भी कम होगी। बजट में एमएसएमई तो आप शुणुले नायब सिंह सैनी हरियाणा मुख्यमंत्री तांकर प्रतिक्रिया रखुले बजट को लेकर। तो आम जो भाव में चर्चा करुले ओडिशा को कौन मिली नहीं आम सहित जो अच्छा कांग्रेस वरिष्ठ नेता और बीजेपी प्रवक्ता सी निज निजर प्रतिक्रिया रखुले किंतु प्रकृत में ओडिशा को कौन मिली बजेट रे अर्थमंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण कौन घोषणा करछन्ती आमे विस्तृत भाव में आपको जनवाई चाहबू। न्यूज रूम रे मो सहयोगी लिपिका जोड़ी होती। लिपिका आउे आम दर्शक मानू भल भाव में बुझे दिंतु जे ओडिशा को बजेट रे निर्दिष्ट भाव में कौन मिली कौन मिलवा जाऊँगी कौन घोषणा करछन्ती डॉक्टर सीतारमण। लिपिका शुणी पार्टी आम दर्शक मान बुझे दिंतु ओडिशा को कौन मिलवा जाऊँगी बजेट द्वारा। आज जितेबाला जानते संसद में बजेट उपस्थापन होती लगातार भाव नवम थर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजेट उपस्थापन करछन्ती। तबे ओडिशा पे एठी प्रश्न जे बजेट रे कोन घोषणा करा जायछि मो गोटे परे गोटे पॉइंट आपण मानकु देखैबी दर्शक मानकु देखैबी जे आत्मनिर्भर बजेट रे ओडिशा पई कोन घोषणा करा जायछि। तबे आपण माने देखि पारुथिबे जे प्रथम पॉइंट अछि ओडिशा रे हेबो कइंच कॉरिडोर। आपण माने एटा देखि पारुथिबे ओडिशा रे कइंच कॉरिडोर हबो एवं जहाँ कह जाउछि आत्मनिर्भर बजेट ओडिशा पई कोन घोषणा करा जायछि
सेकेंड जो देखा मत्स्य चाष 500 अमृत जलाशय तैयारी करा तबे सेकेंड पॉइंट रे जदि आमे देखिबा मत्स्य चाष 500 अमृत जलाशय तैयारी करा बोली जहाँ घोषणा करा जायछि एवं थर्ड रे देखिबा जदि आखु काजू और नड़िया चाष रे आत्मनिर्भर हेबो भारत तबे आखु काजू और नड़िया चाष रे आत्मनिर्भर हेबो भारत तबे फोर्थ पॉइंट चंदन गछ को प्रोत्साहन देवा राज्यों को सहायता मिली तबे जो देखा चंदन गछ को प्रोत्साहन देवा राज्य को सहायता मिली फिफ्थ रे देखा चाष क्षेत्र में एआई टेक्नोलोजी व्यवहार पर प्रोत्साहन मिल तबे चाष क्षेत्र में जो समस्या सब रोची ताकू आज बजेट रे ओडिशा पई कौन घोषणा करा जायछि ना चाष क्षेत्र में एआई टेक्नोलोजी व्यवहार में प्रोत्साहन चाष क्षेत्र में आम एआई टेक्नोलोजी व्यवहार करी केमिति अधिक रु अधिक उत्पादन करि परिबा ए नै मध्य आज बजेट रे घोषणा करा जायछि नेक्स्ट पॉइंट आम जदि आसीबा आसंता 5 वर्ष रे हेबो 20 नुआ राष्ट्रीय जलमार्ग तबे आसंता 5 वर्ष मध्य जदि आम देखिबा 20 नुआ राष्ट्रीय जलमार्ग हेबो ताहा मध्य आज घोषणा करा जायछि बजेट रे नेक्स्ट पॉइंट जो देखा राष्ट्रीय जलमार्ग रे जोड़ी हेबो ओडिशार सहर राष्ट्रीय जलमार्ग रे ओडिशार सहर जोड़ी हेबो बोली मध्य घोषणा करा जायछि नेक्स्ट तालचेर अनुगुल कलिंगनगर को पारादीप और धामरा सह जोड़ा जिवो तबे जो बड़ घोषणा करा जायछि तालचेर अनुगुल कलिंगनगर को पारादीप आउ कहा जो देखा धामरा सह जोड़ा जिवो ताहा मध्य आज घोषणा करा जायछि 7टी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकास करा 7टी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मध्य विकास करा ताकू नहीं मध्य आज बजेट रे घोषणा करा जायछि मुंबई पुणे हैदराबाद बेंगालुरु ए सब क्षेत्र में जदि आमे देखिबा हाई स्पीड रेल करा बोली जहाँ विकास करा जायछि एवं मोटामोटी कहबा गले विकास केवल ये जो बजेट 2026-27 नुहे 2047 वर्ष मसीहा बजेट माने विकास केमिति हबो कहीं आम जिते विकसित भारत कथा कहते आर्थिक भारत कथा कहते आर्थिक अभिवृद्धि केमिति हबो भारतर ताकू नहीं चिंता करा जाउछि केवल 2026-27 चिंता करा जाउनी आ 47 चिंता करा जाउछि केमिति विकसित भारत हबो आ अनेक किछि जिनस रे मध्य सस्ता जमी आप कहते जोता कथा कहतु चमड़ा कथा कहतु ईवी माइक्रो ओभन बैटेरी ये सब सस्ता होती आ महंगा कथा जब कहवा खनिज पदार्थ आ मद ये सब महंगा होती तेज ओडिशा पाई आज जदि जितेबाला देखा निर्मला सीतारमण बजेट पेड़ी में कौन रही जो समस्त गोटे आशा था ओडिशा पाई कौन सब घोषणा करा जो आशा था ये सब पॉइंट जहाँ मुझे सब कहली 1 by 1 ये सब बजेट ओडिशा पाई घोषणा करा जायछि एवं गोटे कथा कहि परिबा अस्थिरता सत्ते भी देशर आर्थिक स्थिरता आसीछि लोकंक जीवन शैली को उन्नत करा जायछि लोकंक जीवन धारण मान रे परिवर्तन आसीछि निवेशकंक पसंद एवं भारत उपरे केंद्रीभूत स्वदेशी शक्ति वैश्विक महत्वाकांक्षी बजेट रे प्रतिफलित होइछि भारत विश्वर तृतीय बृहत अर्थनीति आड़ को अग्रसर हेबो तबे गरीबंक उपरे जो देखिबा सरकारंकर अधिक फोकस मध्य रहिछि आउ एआई उपरे गुरुत्व दिया जायछि। धन्यवाद लिपिका जो भाव में सूचना दौले ओडिशा को ओडिशा पाई निर्दिष्ट भाव में जहाँ घोषणा करा जायछि बजेट रे से संपर्क में घोषणा से संपर्क में सूचना दौले लिपिका तो पुणी थर आम टैक्स डायरेक्ट टैक्स कथा बा प्रत्यक्ष जो कर रही इनकम टैक्स से संपर्क में कौन एथर घोषणा करा जायछि बा कौन रिहाती मिलवा जाऊँगी नागरिक मानू से संपर्क में बर्तमान पुणी थे नजर पकड़ा जदि आम देखा टैक्स क्षेत्र में सीधासलख भाव में वरिष्ठ नागरिकों बजेट रे गोटे रिहाती मिलवाई जाऊँगी जोटा स्टैंडर्ड डिडक्शन परिमाण 1 लाख टंका को वृद्धि कर दि जाएगी जोटा 12 लाख थिला जो आयकर छाड़ सीमा एवं से 12 लाख अपरिवर्तित रखा जाए गोटे गत बड़ जंप होता आयकर छाड़ सीमार से 12 लाख अपरिवर्तित रही कि वरिष्ठ नागरिकों स्टैंडर्ड डिडक्शन परिमाण 1 लाख टंका को वृद्धि कर शिक्षा ऋण और 10 लाख पर्यंत वैदेशिक अर्थ प्रेरण उपर लगे ना कौन टैक्स 2टी निजस्व संपत्ति क्रय उपर टैक्स रिहाती मिल टिकस रिटर्न फाइलिंग समय सीमा 4 वर्ष पर्यंत वृद्धि कर दि जाए आर्थिक वार्षिक 12 लाख पर्यंत आय उपर संपूर्ण कर छाड़ जो कथा गत थर थिला एवं ए न्यू टैक्स जो रिजिम रही से ए वर्ष ठारू कार्यकारी हम वेतन भोगी जो माने कर्मचारी रही स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 को वृद्धि करा जायछि अर्थात मोटामोटी भाव 12 लाख 75,000 पर्यंत कौन टैक्स लगे ना जो मानकर आय वार्षिक 12 लाख 75,000 टंका अर्थात मासिक जदि आम हिसाब करवा पाखापाखि 1 लाख 6,000 टंका पर्यंत जदि आपणकर मासिक आय रोचे मासिक दरमा आपणकर रोचे आपण को कौन भी टैक्स दबाकू पड़ो ना ये हूँ ए
बजेट्र सबुठु बड़ घोषणा एवं गत थर ये नहीं कि घोषणा करा जायतिला जहाँकि चलित आर्थिक वर्ष ठारू लागू होबाकू जाउछि एवं जो मान रहिछथि वेतनभोगी खास करी एटा मध्यवित्त मानक पई गोटे बहुत बड़ रिलैक्स बा बहुत बड़ रिहाती थिला गत बजेट रे घोषणा थिला किंतु तार प्रकृत फायदा एई आर्थिक वर्ष ठारू पाइबाकू जाउछन्ति जो मान रहिछन्ति वेतनभोगी मध्यवित्त मानक पई कारण लक्षे टंका पर्यंत दरमा 1,06,000 टंका पर्यंत दरमा जो माने मध्यवित्त श्रेणी रे आछन्ति उच्च मध्यवित्त निम्न मध्यवित्त सेमानक पई एटा बहुत बड़ सेमानक पई रिहाती कहबाकू गले कारण मध्यवित्त कौन गरीबों घोषणा कर धनी कॉर्पोरेट सेक्टर पर घोषणा होची मध्यवित्त केवे किसी करूना एक कथा थिला अभियोग और गत थर से गोटे बड़ घोषणा करा जायतिला टैक्स को 12 लाख को सीधा सड़क आयकर छाड़ सीमा को कर दिया जायतिला आम पैनलिस्ट मैंने अच्छा किंतु पूर्व आम नुआ दिल्ली को नवाक चाहबू नुआ दिल्ली जोड़ी होती गगन विश्वाल आम प्रतिनिधि और सहित अच्छा केंद्र मंत्री जुएल ओराम केंद्र आदिवासी कल्याण मंत्री जुएल ओराम सहित अच्छा गगन ए जो बजेट उपस्थापन कले डॉक्टर सीतारमण ताकू नहीं कि केंद्र मंत्री जुएल ओराम कौन कहते सीधा सड़क प्रतिक्रिया नवा केंद्रमंत्री जुएल ओराम आम सहित जोड़ी होती आज्ञा कौन कहे बजेट को नहीं खास कर ओडिशा परिप्रेक्षी और आदिवासी मंत्रालय परिप्रेक्षी आम जान ये तो ऐतिहासिक बजेट अच्छी ओडिशा रे जतकी माने इंफ्रास्ट्रक्चर रो महत्व दिखाई ओडिशा को जतकी महत्व दिखाई मु भावुची अतीत रे केबे भी यूनियन बजेट रे एतकी महत्व दिया ही नथिला ट्रैवल डेवलपमेंट रे भी आपनकर बजेट बढ़ी अच्छी सबू प्रोग्राम आमर कंटिन्यू करुची पीएम जनमन करुची धरती आबा करुची तार संगे संगे आमर सबुथिरे पैसा अधिका लेखा बढ़े दिखाई आउ काम करने कराई एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल आउ बंधन लाइवलीहुड प्रोग्राम एगुड़ा सब बहुत बढ़िया भाव में कंटिन्यू करुची मु भावुची कि जनजातिंकर एटा बहुत बड़ कल्याण हेबो बहुत बड़ विकास हेबो प्रति जिले में गोटे गोटे गर्ल्स हॉस्टेल ये भी गर्ल्स स्टूडेंट मान को जो पढ़ार असुविधा होता तांको सुविधा देव तो से मुझे स्वागत करुच्ची बहुत बढ़िया अच्छे यहाँ भल जनजाति इम्पैक्ट पड़ो गर्ल्स हॉस्टेल नहीं आदिवासी जो छात्र छात्री रही से केते बेनिफिट हे खास करी जो 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 एरिया थिला जो पछुआ एरिया थिला जमी ओडिशार अनेक जिला रही जोटी कनेक्टिविटी सुविधा नहीं से जगह ये हॉस्टेल गुड़िक केते आपण ओडिशार 30 जिलू 26 जिला हूँ आपणकर जनजाति बहुड़ एगुड़े सब हॉस्टेल हेब आउ लोक मानकर सेमती तो आपणकर भुवनेश्वर भी आम काफी हॉस्टेल बनईछु ठकर बापा ये से करी तो एगुड़ा आहरी बढ़िया द्वारा आमर माने पाठ पढ़ार सुविधा हेब आप जानते बहुत झील पिला माने तांकर रहिबार व्यवस्था नथिबा हेतु बा सेमने ताकू भड़ा दे पारिबे नाही तेणुक से बाहर जाकर पढ़ी पारु नथिले एबे ये बहुत लाभदायी हेब आउ आमर आखु काजू नड़िया चाष तीनटा को प्रमोट कराई ओडिशा रे नड़िया एवं आखु ये बहुत मात्रा चाष हुए ये प्रमोशन रे ओडिशा निश्चित भाव फायदामंद काजू भी बहुत बेसी हुए आप जानते कोरापुट एरिया रे आउ कॉफी भी हुए एगुड़ा को तो काफी प्रमोशन दिखाई बोलिक बहुत लाभ हम लोक कैछ कॉरिडोर कथा कहतु ए दिगरे एवं जो जलपथ आविष्कार करा जिवो से क्षेत्र रे मध्ये ओडिशा लाभ आपणकर जलपथ केवल आविष्कार करा जिवो नै सेतरे स्पेशल स्कूल भी तैयारी हेबो ट्रेनिंग भी दिया जिवो आ सेतरे बहुत लाभ हेबो एटा गोटे बहुत बड़ काम हेबो हमर तालचेर रु अनगुड पर्यंत जो जलपथ हेबो तार परे जो रेयर अर्थ जो मिनरल्स ट्रांसपोर्टिंग आप जानते मिनरल ट्रांसपोर्टिंग टा केते बड़ गोटे कठिन काम थिला एबे तार पई बोलकर डेडिकेटेड कॉरिडोर हम ये भी आमर पई बोलकर बहुत लाभवान हो बहुत बेसी ओडिशार बजेट रे एते अति दिन रे एते बेसी बेनिफिट आम पाई नथले एबे बहुत अधिक आमको डिटेल सामना को आसीनी आशा करिबा रेल बजेट रे मध्ये भलो फायदा मिलिबो आपण निश्चित भाव में मिल गला थर 10,000 कोटी ऊपर दिखाई ए वर्ष मु भावुँ आहरी अधिक मिल
थैंक यू शक्ति आप शुणुले ज्वेलराम आम सहित जोड़ी होते जे कि अधिक इनफॉरमेशन आमको दौले ओडिशा पई भल सूचना एजे सांसद एजे मंत्री ओडिशा से रही केन्द्र में से परिप्रेक्षी से खुशी व्यक्त ओके बहुत बहुत धन्यवाद गगन गगन विश्वाल आम प्रतिनिधि प्रतिक्रिया नौले ज्वेलराम तो आम बर्तमान आपन को नहीं जाऊँ डीएवी बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल को एवं सेठू जोड़ी होती मो सहयोगी स्वप्नांजलि महांती और सहित अच्छा बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल जो मैंने रही विद्यार्थी रही अध्यापक अध्यापिका रही तो स्वप्नांजलि ये बजेट को लेकिन जो मैंने रही विद्यार्थी डीएवी बिजनेस मैनेजमेंट तो से कौन प्रतिक्रिया आसुच्ची खुशी से अच्छा बजेट को नहीं देखो शक्तिशाली निश्चित भाव में वर्तमान बजेट आसी सारी बजेट एलोकेशन को लेकिन सबुआड़े चर्चा होशा खास कर आप देखिए विभिन्न दिगरे बजेट एथर रही कि प्रायोरिटाइज बेसिस जदि आप देखिए भारतीय स्तर में ताहले गोटे हूँ रेलवे द्वितीय हूँ रोड कनेक्टिविटी ता सहित आप देखिए टूरिज्म एवं इंडस्ट्री एवं एआई एजुकेशन ए दिग को चारोटी दिग को बेसी करके प्रोविजन रही विशेष भाव में बजेट ता उपर एलोकेशन होती सीधा साल कथा जो मैंने मैनेजमेंट स्टूडेंट्स अच्छा से कौन आज चिंता कर प्रतिक्रिया नवा जेहेतु बजेट समस्त गोटे अपेक्षा रही है से कौ दिगरे देखी ये आप देखुए ग्रीन एनर्जी जो पिला रही तार रिसर्च करते केते ग्रीन एनर्जी बजेट आसी केंद्रीय बजेट 2026 आसी सारी आम देखुलु विभिन्न दिगरे बजेट एथर भल प्रोविजन कर इंडिया तो ग्रीन एनर्जी आप कौन बजेट को केमती एनालिसिस कर ग्रीन बजेट भी भल गवर्नमेंट अडप्ट कर कार्बन यूटिलाइजेशन 20,000 करोड़ 5 साल ये ग्रीन बजेट ग्रीन एनर्जी को सोलर एटोनॉमी को ग्लास मैन्युफैक्चर पर कस्टम ड्यूटीज फ्री हो जी क्लाइमेट चेंजेस एयर पॉल्यूशन 4,000 ईवी बस नॉर्थ ईस्ट रे इम्प्लीमेंट होची ये ऑल ओवर सर कह जेहेतु ऑल ओवर कह गोटे युव शक्तिर बजेट कह गोटे बड़ पार्ट एथर बजेट रही जे स्वास्थ्य क्षेत्र में बजेट प्रोविजन बहुत भल रही आप देखुए सस्ता कैंसर मेडिसिन एवं ता सहित विभिन्न मेडिसिन गुड़िक डायबिटिक मेडिसिन गुड़िक सस्ता होती स्वास्थ्य गोटे गुरुत्वपूर्ण मेरुदंड ओडिशा बा भारत पाई तो ए क्षेत्र में बजेट प्रोविजन एथर भल रही सस्ता अनेक गुरुत्वपूर्ण मेडिसिन करमती एनालिसिस कर जेहेतु ये गोटे भल पदक्षेप नि बायोफार्मा इंडस्ट्री गोटे बड़ जिन अच्छी 10,000 करोड़ जो नेक्स्ट 5 ईयर प्लान कराई आउ मेंटल हेल्थ एंड ट्रोमा जो भी पदक्षेप नि ड्रग्स बेसिक कस्टम ड्यूटी जो आम होटा कम कराई तो यहाँ जेहेतु मिडिल क्लास और लो क्लास गोटे भल पदक्षेप एफोर्डेबिलिटी बढ़ मेडिसिन अफोर्डेबिलिटी बढ़ टूरिज्म क्षेत्र में आप देखिए जे पाखापाखि 10,000 गाइड को एथर इनिशिएटिव स्तर में नियाजिब सर ऑल ओवर बजेट को आप केमती देखुं जदि टूरिज्म हेल्थ पायलट स्कीम रे टूरिज्म ता सहित ओडिशा पई अनेक प्रोजेक्ट को कॉरिडोर कर देखिए ओडिशा केरल और आंध्र प्रदेश को खनिज कॉरिडोर कनेक्टिविटी कर तो ऑल ओवर बजेट को आप एथर केमती देखो ये जो आमर बजेटा एथर है एटा तीनोटी जिनस अनुप्रेरित रही गोटे है आपणकर ग्रोथ सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ सेकेंड हूँ टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ पीपल तृतीय हूँ आपणकर सबका साथ सबका विकास तो एथरे आमे टिके ध्यान देइछु एथरे गवर्नमेंट ध्यान देइछि आपणकर एमएसएमई रे इन्वेस्टमेंट्स उपरे आपणकर ट्रांसपोर्टेशन बहुत गुड़ाक रेल कनेक्टिविटी आपणकर डेवलपमेंट हम आपणकर इंफ्रास्ट्रक्चर हो आपणकर इरिगेशन हो से भी ध्यान दिखाई अर्बन डेवलपमेंट पे भी आपणकर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत किसी ध्यान दिखाई ओवरऑल देखिले आपण एमएसएमई इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिसिन आपणकर एग्रीकल्चर सबुत ध्यान दि जाइए आउ टैक्सेसन एथर किसी चेंजेस नहीं स्लैब रे कारण आपणकर 2024 बजेट आप देखो 7 लाख थिला टैक्स एग्जाम्पशन लिमिट आउ 75,000 आपणकर थिला स्टैंडर्ड डिडक्शन से लास्ट बजेट आप 12 लाख होगा तो आम जहाँ आशा करूँ यही बजेट रू किसी टैक्स स्लैब रे किसी रिलैक्सेसन हम सेटा किसी भी भावुलु हो न पारे कारण ऑलरेडी बहुत किसी बेनिफिट्स मध्यवित्त परिवार को दि जाइए किंतु किसी आपणकर टीसीएस एंड टीडीएस रिलैक्सेसन होती आपणकर मिनिमम अल्टरनेट टैक्स रे जोटा 15% थिला आपणकर ओल्ड रिजिम रे सेटा 14% हो जाइए जोटा कि आपणकर जो मैंने ओल्ड रिजिम रे अप्लाई कर किसी बेनिफिट हम आपणकर आ गोटे जिस आपणकर
सिक्यूरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स किछिटा इनक्रीज होईछि जोटा कि ई टैक्स आउ किछि बेसी चेंजेस हेई नाही आ हमर जो एबे हला हमर जो नुआ जोटा कि बहुत किसी बेनिफिट दब आपणकर टैक्स पेयर मानक जो आपणकर फाइलिंग एंड कंप्लेंस रे बहुत किसी इजी हो जीवो हाँ से बहुत किसी इज आउट हो सब जिन एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट को मध्य गुरुत्व दि जाइए एवं ये बजेट को कह जाउछि युवा शक्तिर बजेट आप केन्द्र गृहमंत्री कथा कहतु ट्वीट बा केन्द्र मंत्री शिक्षा मंत्री ट्वीट को कथा को जदि एनालिसिस करुछि ताले युवा शक्तिर बजेट कह जाउछि आपण यूनियन बजेट 26-27 पई आलोचना करथले भित्तिभूमि उपर आपनक टीम रिसर्च करूथला बजेट को देखिकी भित्तिभूमि उपर कोन प्रभाव पड़ी पारे ओडिसा पर्सपेक्टिव रे किछि एनालिसिस होइछि आज्ञा आमर भित्तिभूमि ओडिशा रे रूरल मिनरल कॉरिडोर्स बनाओ बोली कहुई जो थे कि तालचेर अनुगुल रहीगला आमर वाटर कनेक्टिविटी बढ़ाया भी आमर पारादीप पोर्ट को निगला जो थे कि आमर वाटर कनेक्टिविटी बढ़ो आमर रेलवे भी आमर 7टा फास्ट रेलवे कॉरिडोर्स भी बना आउ प्रीवियसली आमर प्रीवियस ईयर रे टोटल 11 लाख कोटी आमर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता आउ एथर सेटा को बढ़ाई 12 लाख कोटी रही तो ओवरऑल जदि देखा इंफ्रास्ट्रक्चर रे बहुत बड़ा इंपैक्ट होती एथर बजेटा आउ सेटा आमर इंडिया डेवलपमेंट भी बहुत इंपोर्टेंट ऑल ओवर बजेट पाखापाखि बहुत भल होली ये चर्चा होची आउ किछि प्रतिक्रिया मध्य नबा जो माने एक्सपर्टीज अछंती सेमानकर मध्य प्रतिक्रिया नबा सर एबे ऑल ओवर बजेट को नेकी सबआडे चर्चा जेहेतु ओडिशा गोटे बड़ पर्सपेक्टिव रखथिला टूरिज्म क्षेत्र रे एवं रेलवे ता सहित आईटी एआई एजुकेशन उपरे जेहेतु आपनकर इंस्टीट्यूशन होची वर्तमान एआई बेस्ड करा जाउची तो एआई एजुकेशन को वर्तमान गुरुत्व आरोप करा जायछि केंद्रीय बजेट रे तो याकू केमति देखु नहीं देखो एआई इन एजुकेशन हो कि आपंकर टूरिज्म सेक्टर रे गोटे जिनस जोटा कि सरकार फोकस करेले जोटा कि गुरुत्व देले सेटा होची मेडिकल टूरिज्म हाँ किंतु एआईटा मेन करी फोकस करा जाय आपनकर कृषि क्षेत्र रे देखो जदि आपनकर शिक्षा क्षेत्र रे देखा जिवो हेटा ऑलरेडी हेई सारलानी कोविड पूर्व ऑनलाइन एजुकेशन किंबा ऑनलाइन प्लेटफॉर्मटा थिला तार गुरुत्वटा आमे जानि पारु नथलो कोविड हेला महामारी हेला लोक घरे बसिले तापर आमे जानिले हे दिल्ली रे बसिके आमे जने टीचर गुरु पाठ पढ़ी पारिबु एआई रो प्रकृत महत्वटा सेठी बुझा गला सेटा धीरे धीरे आपनकर आजिका डेट रे आसिके चैट जीपीटी जेमिनाई ग्रोक आपनकर जहा आसिलानी पळे आसिलानी ता व्यतीत आपन जदि कृषि क्षेत्र रे देखिबे आपनकर एआई क्षेत्रटा एठी जोटा चाषी जानिबा दरकार मु गोटे घरे बसी कि ड्रोन सहायता भी चाष करि पारिबी मंजी बुनी पारिबी एवं प्रकृत पक्षरे वर्षाटा को समय रे हबो से जिनसटा बड़ी एक ताकत बनेंगे देश की जिससे कि दुनिया भर को नई सर्विसेज और भारत के लिए नए एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के नए रास्ते खुलेंगे। तो डेटा सेंटर्स पे जो टैक्स हॉलिडे दिया इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ ऑरेंज इकोनॉमी जो हमारी क्रिएटर्स इकोनॉमी है इसमें 20 लाख एम्प्लॉयमेंट नए बनाने के लिए क्रिएटर्स इकोनॉमी में आईआईसीटी मुंबई के साथ मिलकर 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजेस में क्रिएटर्स लैब बनाने के लिए बजट में प्रोविज़न किया गया है। और साथ ही साथ रेलवे के लिए 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स चेन्नई से बेंगलुरु, चेन्नई से हैदराबाद, बेंगलुरु से हैदराबाद, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। एक तरीके से साउथ इंडिया में सदर्न ट्रायंगल बनेगा चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद का हाई स्पीड रेलवे का, बुलेट ट्रेन का। वैसे ही दिल्ली, वाराणसी, सिलीगुड़ी का एक नया हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा और साउथ वेस्ट को साउथ से जोड़ने वाला मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद का एक बहुत बड़ा मेजर कॉरिडोर बनेगा। साथ ही साथ आज बजट में एक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि बंगाल में दांकुनी, वहाँ से गुजरात में सूरत, इसको जोड़ने वाला, ईस्ट को वेस्ट के साथ जोड़ने वाला नया डीएफसी भी सैंक्शन हुआ है। मैं इस बजट के लिए जो कि युवा शक्ति से प्रेरित है, जो कि विकसित भारत की एक मजबूत नींव बनाता है, जो कि समाज के हर वर्ग के लिए और देश के हर क्षेत्र के लिए विकास का एक नया माध्यम बना है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। बजट में कितना लोकेशन किया गया? केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव का प्रतिक्रिया शुणुते बजट को लेकर। तो ये बर्तमान सामना को आस एक्स रे पोस्ट कर केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सी पोस्ट कर जहाँ लिखिं एक्स पोस्ट रे विकसित भारत संकल्प को पूरा करने को बजट रे दृढ़ ब्लूप्रिंट भारतर अभिवृद्धि संभावना को संपूर्ण उपयोग करा समस्त वर्गर
अंतर्भुक्तिमूलक विकास को प्रोत्साहित करा जिवो। प्रधानमंत्री एवं अर्थमंत्री एक भविष्यवादी युवशक्ति संपन्न बजेट लोकाभिमुखी निजुक्तिमुखी अभिवृद्धि और प्रेरणादायक केंद्रीय बजेट रे गुरुत्व दिया जाइथिबारु अभिनंदन जणाइछंती केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। बजेट रे लोकंक कल्याण उपर गुरुत्व दिया जाइथिबा कथा से कहउछंती। गरीब और मध्यवित्त परिवार पई खुशी आनी देछि बजेट देशर आर्थिक अभिवृद्धि को त्वरान्वित और निरंतर करिबा। लोकंकर आकांक्षा पूरण सह जीवन यापन सहज करिबा तीनिटी मुख्य कर्तव्य द्वारा अनुप्राणित होई विकसित भारत गठन को प्राधान्य। विभिन्न क्षेत्र में सर्वांगीन अभिवृद्धि को प्रोत्साहित करिबा। रणनीतिक और सीमांतवर्ती क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करिबा। आमर शिक्षा नवसृजन और दक्षता विकास आहुरी सशक्त हवा। एमएसएमई गुड़िक मजबूत होगा। पर्यटन को प्रोत्साहन मिलिबा। बजेट रे स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में व्यापक करने को व्यवस्था करा जायछि। द्वितीय तृतीय स्तरीय सहर गुड़ी को नूतन जो टियर 2-3 जो सिटी रही ताकू नूतन विकास केंद्र में परिणत करने योजना रही। परिवार क्रय शक्ति वृद्धि होगा नहीं व्यवस्था करा जायथिबा केंद्र शिक्षा मंत्री कहते। भारत अभिवृद्धि परवर्ती पर्याय हासिल करने को पदक्षेप संस्कार एक्सप्रेस को गति देवा बोली कहते केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तांकर एक्स पोस्ट रे। तो ये जो वर्ष 2026-27 का जो बजट है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको फलीभूत करने वाला ये बजट है। निश्चित रूप से इससे देश और छत्तीसगढ़ को बहुत लाभ होने वाला है। मैं फिर से एक बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को छत्तीसगढ़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। सर, सीधी टैक्स में कोई कटौती नहीं की गई है। इसका सबसे बड़ा असर यह है कि मार्केट में भी डाउनफॉल देखा गया है, क्योंकि बजट जब पेश होता है तो सबकी निगाहें इस पर रहती है कि टैक्स में कितनी छूट मिलेगी। देखिए, जिस तरह से पिछले बजट में अप्रत्याशित टैक्स में छूट दिया गया, किसी को उम्मीद नहीं था कि 12 लाख का एक मुश्त टैक्स में फ्री मिलेगा, तो ये बहुत बड़ा पिछले बजट में ही राहत मिल गया है। विष्णुदेव सागर प्रतिक्रिया शुणुते छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री प्रतिक्रिया आप शुणुते। तो आम पुणी थे फेर आम पैनलिस्ट पाखक आम सहित सोनपुर जोड़ी होती डॉक्टर हमीद हुसैन और स्टूडियो आम सहित अच्छा अनिल विश्वाल। डॉक्टर हमीद हुसैन, आप विभिन्न प्रतिक्रिया शुणुते और आप प्रतिक्रिया शुणुते। मुझे गोटे कथा आप प्रतिक्रिया नवाक चाहिए जे ए बजेट रे जो भाव में आपन कहते डिफेन्स कथा कहते कृषि कथा कहते, किंतु आपन को कौन लगुनि जे बजेट रे जो भाव में सेमिकंडक्टर कथा कहुई सेमिकंडक्टर 2.0 घोषणा करा जायछि। ओडिशा या द्वारा लाभान्वित होगा। आप कहले जे खाली खनिज शिल्प कथा कहुई खनि लुट कर निशारू, किंतु सेमिकंडक्टर हब बनवा को ओडिशा को जो भाव में निजे प्रधानमंत्री घोषणा करछन्ते एवं दुईटी जो अनिल बाबू कहते दुईटी सेमिकंडक्टर शिल्प माने इंडस्ट्री वर्तमान प्रोजेक्ट वर्तमान ग्राउंड हो सारी। तो जितेबाला यहाँ 40,000 कोटी टंका घोषणा करा जाउछि, ओडिशा ता द्वारा गोटे बड़ लाभान्वित हो पारिबनि कि लाभार्थी हो पारिबनि कि? आप जिते गुड़ाक देखो आप जुएल ओराम कहू कहू कहीदे भल कथा कहीदे जे जहाँ बजेट जहाँ आगुरी था ता कंटिन्यू करुँची नुआ इसमें किसी ना मुझे कस्मेटिक चेंजेस कला बेलू कौटी खाली मेंशन करदे सेमिकंडक्टर कौटी कि कॉरिडोर मेंशन करदे। तो रेल मंत्री आम ओडिशार एवं रेल कॉरिडोर कथा कहते जिते गुड़ा कॉरिडोर कथा कहते साउथर कथा कहते एवं नॉर्थ ईस्ट कथा कहते रेल मंत्री थी गोटे नुआ कॉरिडोर दे पारे ये आपड़ जिते आप से लेडी जड़े जाते महिला जड़े कहते ये गुड़ाक लाभ हम ओडिशा कौन है आकु चाष काजू चाष चंदन गछ ये तो समस्त ओडिशा विशेषकर कौन उपकूलवर्ती राज्य भितर तो ओडिशा निश्चित रूप लाभान्वित हम ये स्पेसिफिकली निर्दिष्ट भाव उपकूलवर्ती राज्य दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली ओडिशा उपकूलवर्ती राज्य जो दड़िया टच उपकूलवर्ती अंचल हम कि उपकूल अंचल आमर के तमिलनाडु के केरला के महाराष्ट्र के सब गुड़ा कर्नाटक अच्छी सब गुड़ा अच्छी ना मारे सारा ओडिशा केवल नुह से जुएलरा बिल्कुल ठीक कहले
ଆପଣ ଜୁଏଲରାମଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କୋଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ସେ କେବଳ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କଥା, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଯୋଉ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଜାରି ରହିଛି ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ओवरऑल बजेट संपर्क से कथा कहना नुआ बजेट कौन आसला ताहले बजेट नुआ कथा कौन आसला मते कहंतु केवल गोटे हॉस्टल प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट रे हबो जोटे हॉस्टल थिबो सेटा हबो नाही। प्रथम थर पई भारत रे तीनटा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद प्रतिष्ठा करा जिवो, तीनटा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद प्रतिष्ठा करा जिवो। एटा नुआ नुहे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट सेटा भलो कथा ना ना सेटा वेलकम कथा किंतु केवल तीनटा विद्यालय केतरा यूनिवर्सिटी अच्छे आम 500-600 अच्छी गोटे दिन खाली बढ़ी खाली आयुर्वेदिक जो यूनिवर्सिटी गुड़ा से इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कथा भल करवा कथा हायर एजुकेशन को प्रमोट करवा कथा रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करवा कथा से किसी कौन बारे उल्लेख ना आप कस्मेटिक चेंज बजेटा हो कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस बजेट आप आयकर कथा कहते आयकर कौन अधिक दिगला कहना केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन वरिष्ठ नागरिकों बढ़ाई देयर इज नथिंग जदि आप वरिष्ठ नागरिक करने चाहूले रेलवे कहीं कन्सेसन दौना जोटा 40% था यूपीए सरकार वाजपेयी सरकार से आप वीपी सरकार सब जोटा कन्सेसन थी से कन्सेसन दौना जो रेलवे जाऊे आगुरी 40% कन्सेसन कहले कोविड पड़ा कोविड तो पड़ेगा बर्तमान कहीं करूना एवं आपंकर पर कैपिटा इनकम कौ प्रकार बढ़ प्रत्येक व्यक्ति मत कहना आय आम 140 नंबर अच्छु एवं आम बांग्लादेश तलक आसलु भूटान मालदीव्स एवं आप नेपाल टू तले अच्छु आम श्रीलंका तले अच्छु तो आम काले देखले हेबनी आप थर्ड मेरे पॉपुलेशन केते सबुठ पर आम सब बेसी पॉपुलेटेड कंट्री टोटाल आपंकर 112 बिलियन आपंकर आय हो जीडीपी पूरा वर्ल्ड आमर केते हेबा कथा आमर हो 15% पॉपुलेशन 17 ट्रिलियन डॉलर हेबा कथा कोठ हो 3 ट्रिलियन डॉलर अच्छु आप 5 भागर भाग आम आप चाइना को कंपेयर कला आपको कौन सी जगह ना हो आमको उन्नति करा पड़ो पर कैपिटा इनकम बढ़ाया पड़ो लोक को रिहाती करा पड़ो जो रिग्रेसिव टैक्स गुड़ाक से काटा पड़ो जो लोक गुड़ाक निजे निजे जो दिन जिनिस किणुच्च जो निहाती दरकार बिल्कुल टैक्स रखा कथा नुह बर्तमान आपंकर विमुद्रीकरण जो टंका जोटा है डिमोनेटाइजेशन और जीडीपी आपंकर जीएसटी जो थी पद्धति से समस्त हाड़ भांगी जाइए कोविड पर आहरी हाड़ भांगी जाइए सेटा आम इम्प्रूव करवा कथा आमर ग्रोथ रेटा बढ़िया कथा एंड प्रत्येक गवर्नमेंट ग्रोथ रेट बढ़ी और नेहरू ठारू इंदिरा गांधी बेसी ग्रोथ रेट इंदिरा गांधी आप राजीव गांधी बेसी वीपी सिंह बेसी सब बढ़ी बढ़ी चली किंतु यही गोटे सरकार जोटे जीडीपी ग्रोथ रेट आप 8% 9% था जितने बेले मनमोहन सिंह सरकार समय से आज खसी आसिक आप 5% and 6% भितर भेरिएशन कर 6.5 केते तो यहीटा हमको देखा कथा ओके ठीक अच्छे जो जो कथा गुड़ी आप उठे मु तार प्रतिक्रिया नवा चाहिए डॉक्टर हुसैन मुझे आसबि आपण पाखु अनिल विश्वाल आम सहित अच्छा बीजेपी प्रवक्ता जो कथा गुड़ी उठे एथर बजेट रे नुआ किछि नाही पुराना जो कहुए पुराना बोतल रे नुआ नुआ बोतल रे पुराना मद से भली भाव में बजेट को उपस्थापन करा जायछि। देखो मु गोटे पर गोटे पॉइंट रे आसीबी जो कथा कांग्रेस प्रवक्ता उठाउथिले से प्रथमे खनिज पदार्थ लूट कथा कहते ओडिशा रे जेबे माइनिंग काम होता केन्द्र में कहा सरकार था इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्सटा कौ सरकार अंडर से कांग्रेस सरकार समय ही ओडिशा रे खनि दुर्नीति होता एवं ओडिशा रे खनि लूट करी पूरा कांग्रेस दलर जड़े लोक जड़े नेता तांकर बहुत प्रॉपर्टी बनई यहाँ कौन हमिद भाई जानी ना द्वितीय कथा है इकोनोमी जीडीपी ग्रोथ कथा कहते मुझे आह्वान करुच्ची जो समय यूपीए सरकार था से समय जीडीपी ग्रोथ देखूँ 2011, 12, 12, 13, 9, 10, 10, 11 4%, 5% जीडीपी ग्रोथ थिला आज 7.5% जीडीपी ग्रोथ अच्छी मु तो भावुची जदि कांग्रेस सरकार आज समय था ये जो एआई इनोवेशन हो ए ग्रीन एनर्जी कथा हो एवं रिसर्च एंड इनोवेशन अदर सेक्टर हो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो ए कथा गुड़िक भारतवर्ष आज देखी भी न था सी कांग्रेस केवल से गात खोलिबा एमजी नरेगा भली स्कीम लोक बुड़े रखी था तेणु मूल कथाटा हूँ बजेट रे जो वार्ताटा अच्छी जोटा केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान सोशल मीडिया पोस्ट लिखी भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा,
नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। ये बजट ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और ह्यूमन सेंट्रिक अर्थरचना के विजन को साकार करता है। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। साथियों, ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। भारत के 140 करोड़ नागरिक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर ही संतुष्ट नहीं है। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। ये करोड़ों देशवासियों का संकल्प है। दुनिया के एक ट्रस्टेड डेमोक्रेटिक पार्टनर और ट्रस्टेड क्वालिटी सप्लायर के रूप में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। हाल में जो बड़ी बड़ी ट्रेड डील्स भारत ने की है, मदर ऑफ ऑल डील्स, उसका मैक्सिमम बेनिफिट भारत के युवाओं को मिले, भारत के लघु और मध्यम उद्योग वालों को मिले। इस दिशा में बजट में बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं। साथियों, इस बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार के लिए महत्वाकांक्षी रोड मैप प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में नई उभरती इंडस्ट्रीज यानी सनराइज सेक्टर्स को जिस मजबूती के साथ समर्थन दिया गया है वह अभूतपूर्व है। बायोफार्मा शक्ति मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, रेयर अर्थ कॉरिडोर का निर्माण, क्रिटिकल मिनरल्स पर बल, टेक्सटाइल सेक्टर में नई स्कीम, हाईटेक टूल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, चैंपियन एमएसएमईज तैयार करना, ये फ्यूचरिस्टिक है, देश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखती है। एमएसएमईज को, हमारे लघु और कुटीर उद्योगों को जो समर्थन इस बजट में मिला है वह उन्हें लोकल से ग्लोबल बनने की नई ताकत देगा। साथियों, बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, देश भर में वाटरवेज का विस्तार, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास पर विशेष ध्यान और शहरों को मजबूत आर्थिक आधार देने के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड्स को बढ़ावा। ये सारे कदम विकसित भारत की यात्रा की गति को और तेज करेंगे। साथियों, किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी उसके नागरिक होते हैं।
बीते वर्षों में हमारी सरकार ने देश के नागरिकों के सामर्थ्य को बढ़ाने पर अभूतपूर्व निवेश किया है। हमारा प्रयास स्किल, स्केल और सस्टेनेबिलिटी को निरंतर बल देने का रहा है। जैसा कि आज पार्लियामेंट में निर्मला जी ने कहा है, यह युवा शक्ति बजट है। उसमें युवा की सोच भी है, युवा के सपने भी हैं, युवा का संकल्प भी है और साथ साथ युवा की गति भी है। बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उससे अलग अलग सेक्टर्स में लीडर्स, इनोवेटर्स और क्रिएटर्स तैयार होंगे। मेडिकल हब्स के निर्माण से, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के माध्यम से, ऑरेंज इकोनॉमी यानी ऑडियो विजुअल गेमिंग को बढ़ावा देकर, पर्यटन को प्रोत्साहन देकर और खेलो इंडिया मिशन के माध्यम से युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खुलेंगे। भारत को दुनिया का डेटा सेंटर हब बनाने के लिए टैक्स में बड़ी छूट की घोषणा भी की गई है। मैं भारत के युवाओं को विशेष तौर पर इस बजट की बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बड़ा बूस्ट मिलेगा। मुझे बहुत खुशी है कि इस बजट में टूरिज्म और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी ठोस कदम उठाए गए हैं। भारत के अलग अलग राज्यों को ताकतवर बनाकर संतुलित विकास की नींव भी इस बजट में मजबूत की गई है। साथियों,